better बड़ दिशु आमको चिंता नहीं तांको जो माने देखो मोबाइल रे देखो ना भाईना मोर रूम रे टेबल आनला बायोलॉजी लैब रो ए पिलां को के आने दियो ट्रेनिंग अछि मो सेटे बसबे हम So now let us start again. Hey. Move on. Ita move करनी. Please, someone is talking. ना पार्टिसिपेंट म्यूट कर देले पुणी से माने कहिबे ना ऐसे इंज किंज बाहर के म्यूट के हाँ someone is talking please don't talk in the middle. Acha, now ABO blood group is an example of this is a thing which zoology participants can also answer. Multiple allelism. Sir, both A and multiple C. allelism. Huh? Sir, codominance and multiple alleles. Multiple alleles. Codominance and multiple allele or multiple allele. Multiple alleles. And the codominance multiple and allele. multiple alleles. Both, sir. Anyone else who wants to answer? Both Multiple alleles. Remember this. The answer is multiple alleles. No, sir, codominance and multiple. Both A and C. That is codominance and multiple alleles. Because what is codominance? Both the dominant genes express together. Codominance is here the A blood group and AB. When they are together, they form AB blood group. This is codominance. Why multiple allele? There are 3 alleles for the same gene. That is why it is called multiple allele. So both codominance and multiple allelism. So ABO blood group is an example of codominance and multiple allelism. Next, a test cross of capital A small a, capital B small c, small b, capital C small c produces how many phenotypes? कौन ये चाल क्षीर चाल है बिना चाल
कौन किए कहि परियोनी अच्छा यार आंसर अच्छा मत को मोनोहाइब्रिड क्रॉस रे रेशियो केते टेस्ट क्रॉस रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस रे टेस्ट क्रॉस रेशियो केते हाँ 1:1 1:1 वेरी गुड डाइहाइब्रिड क्रॉस रे टेस्ट क्रॉस रेशियो केते 1:1 ना केते Yes, sir. Right. यस सर वेरी गुड ताहले 80 सेम फॉर्मूला अप्लाई कलो 2 to the power n minus x 4 होगा सर आंसर डी राइट केतुटा ये अछि कोन कहलो केतुटा कोन हेटेरोजाइगस अछि दीटा यस टोटल जीन पेयर केते 3 टोटल पेयर होछि Three. तिनिटा तीनटा ताहले n to the power 3 minus होमोजाइगस केते 1 सो n to the power 3 minus n to the power 3 minus 1 is equal to 2 to the power 3 minus x is equal to kete 2 to the power 2 to the 3 power 2 minus 1 3 minus 1 is 1 is equal to 2 to the power 2 2. that is 4 Yes. is it okay Yes. that wrinkled seeds are produced because of it is data question same he jaichi माने दीटा आंसर सेम ही जाइछि सी एंड डी ए तीनटा भितर को कोटा आंसर ऑलरेडी यार आंसर टा म कहि देछि कहि परियोनी अच्छा मते को राउंड एंड रिंकल्ड भितर कोटा डोमिनेंट Round, sir. राउंड एंड रिंकल्ड भितर कोटा डोमिनेंट राउंड राउंड टा डोमिनेंट अच्छा वर्तमान को कोटा म्यूटेंट बोली भाबुछो रिंकल्ड ना म्यूटेंट जीन कोटा रिंकल्ड ना राउंड म्यूटेंट जीन कोटा रिंकल्ड ना राउंड wrinkled mutant gene wrinkled is mutant and round is wild which is dominant वर्तमान को कोटा आंसर कोटा रे डिफेक्ट अछि राउंड सीड रे डिफेक्ट अछि ना wrinkled सीड रे डिफेक्ट अछि wrinkle रे ताले कोटा आंसर हम वर्तमान को सी डी रे तो आंसर समान अछि हाँ सी जोटा को मु कहि देली आगरो तीनटार भूल रे दीटा जगह एका ही जेछि गोटे मोर हवा दीटा कथा हो गोटे लेस हां ए ना बी ना सी ना डी ए ना बी ना सी डी मु कहि दोछि केमति गेस करिवो देखो वाइल्ड एलिली होछि राउंड बिकॉज़ दैट इज नॉर्मल म्यूटेंट एलिली नो फंक्शन नैतिले हुए तो सीड ही न होई थांता सीड होउची किंतु माने स्टार्च होउची किंतु कम होउची सेति पे सीड ता रिंकल्ड होउची सेति पे आंसर कोन हबो लेस एफिशिएंट फंक्शन कम स्टार्च प्रोड्यूस सेति पे रिंकल्ड होउची जदि बिल्कुल फंक्शन न थांता ताले सीड बिल्कुल हेई न थांता
से सीड डेवलप ही करना था। अच्छा नेक्स्ट एटा ये होनी चेंज हवा कौन करियो पड़ियो एठी उठी कौन करथिले हाँ अच्छा number of laws formulated by Mendel केतरा चारटा सर हाँ सर 4 और भूल नुह किंतु ठीक होची 3 काहे कि लॉ ऑफ प्यूरिटी गैमेट तमे जोटा धरुचो सेटा एक्चुअली एग्जिस्ट करूनी तमे एनसीईआरटी बही देखियो तीनटा अछि सेति पय मु क्वेश्चनटा देली परीक्षा रे जदी पढिबो तीनटा पिला को सिखेइबो बेटर जदि भी किसी एपट सेपट हुए ताले तीनटा को भी क्रेडिट दिया जीवो 4 3 एही भलिया माने लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आ प्यूरिटी गैमेट प्यूरिटी लॉ पेयर फैक्टर चारटा हबो हां कोनटा को चारटा कोन लॉ पेयर फैक्टर लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट प्रथमटा कोन लॉ पेयर फैक्टर पेयर फैक्टर कुठी अछि there is no such law the laws are 3 law of dominance laws को बहिरेटा देछि ट्रूमेंस हां ट्रूमेंस एलिमेंटरी बायोलॉजी ट्रूमैन टा फॉलो करछो लॉ ऑफ ये तमरो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रे कोन अछि it is 3 remember that it is 3 follow please follow NCERT textbook or your CHSE board textbook don't follow other books as far as examinations are concerned now you are dealing with CBSE syllabus so follow the NCERT textbook next up लंबा क्वेश्चन टा तबे पढ़ी करी a brown eyed man with dark hair marries a woman with blue eyes and dark curly hair तांकर चारिटा छुआ what is the genotype of children इटा एलिमिनेशन रे आंसर टा बाहरियो भीतर को जीवा दरकार नै क्लियर कट अछि टिके चिंता करो न कहि परले मत संगे संगे कहबो मो आंसर तुमको एनालाइज करके कह दे जल्दी मु कहि दउची तुम धरि परियो देखो आंसर ए इटा डायहाइब्रिड क्रॉस ना मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहला एतिक मते को डायहाइब्रिड सर डायहाइब्रिड ताहले वर्तमान चारटा जगह चॉइस देखो कोटा आंसर हो कोटा आंसर है पारे एथुरु दीटा ही आंसर है परिवो आउ दीटा है परिवोनी क्विक मु कहि दिए काई के दीटा है परिवोनी देखो आंसर एटा देखो प्रथम रे कोन लेखा एजिटे सर रमेश सर पठितिले तो
ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଦିଟା କ୍ଲାସ ର ଲଗାତାର ଅଛି କ୍ଲାସ ପିରିୟଡ ର ଅସୁବିଧା ମୁଁ ଯାଇକି କ୍ଲାସ ନିଏ प्लीज म्यूट योर माइक अच्छा मते कहले प्रथम टारे कोन अछि कैपिटल बी स्मॉल बी अच्छा ए रे अच्छा सी रे कोन अछि कैपिटल बी स्मॉल बी एटा होछि डाइहाइब्रिड क्रॉस जदि एटा डाइहाइब्रिड क्रॉस गोटे ऑफस्प्रिंग रे गोटाई जीन हेई परिबो की बी एंड देयर इज नो आर देयर बुझी पारलो ना नाही ए रे प्रथम चाइल्ड रो कैपिटल बी स्मॉल बी सी रे प्रथम चाइल्ड रो कैपिटल बी स्मॉल बी ता अर्थ इति केवल बी जीन टा रहिछि से सेठी आर जीन नाही दिस इज नॉट पॉसिबल इन ए डाइहाइब्रिड क्रॉस सो ए एंड सी आर एलिमिनेटेड तापरे आउ दीटा रहला बी एंड डी रु निश्चित भाव में बी ही आंसर कहीं तांकर कैरेक्टर फादर मदर रो अलगा अछि एटा होमोजाइगस कंडीशन दीटा जाक देखोछि डी रे किंतु ऊपर देखो ब्राउन आइज डार्क हेयर एंड ब्लू आइज कर्ली हेयर so it must be heterozygous so the answer is B आ बेसी आ भितर जीवानी आउरी बहुत अच्छी नाउ इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाज डिस्कवर्ड बाय incomplete dominance was discovered by Yes, sir. Correns. Very good. Next. एटा मु जो फार्मूला कहली तादरु बाचकिर को तार आंसर टा ए मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट केते दूर बुझिछ मु कहि दउ एटी फार्मूला भी दरकार नहीं तमे इजीली कहि परियो A Mendelian experiment consisted of breeding tall plants bearing violet flowers with short pea plants bearing white flowers. The progeny all bore violet flowers, but almost half of it were short. This suggests that the genetic makeup of tall plant can be depicted as tall plant. What could be the genetic makeup of the tall plant? Is it A, sir? Acha. Not A. How to get trial new? देखो टॉल टा डोमिनेट ना नहीं मते को टॉल टा डोमिनेट वायलेट टा डोमिनेट हैला ड्वार्फ टा रिसेसिव आ कोटा व्हाइट टा रिसेसिव अच्छा ऑफस्प्रिंग्स रे कोन आसला द प्रोजेनी bore all violet flowers but almost half of it were short. वायलेट फ्लावर्स जदि आसला ताले अधा जदि शॉर्ट हला ताले आंसर ता कोटा हबो
The answer will be C, sir. C, very good. C, काहे sir. ना C नहले तमर सबु वायलेट केबे आसबोनी बुझलो टॉल प्लैनेट रो कैपिटल W किंतु ड्वार्फ रो अलगा रहिबो हेले C हेई परिबो हेले ही तमर से रेशियो आसबो नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल गिव यू द आंसर sickle cell anemia glutamic acid is replaced by valine and the code is GUG eta khali mone rakhta ho it is only informative answer GUG is the codon that is used for sickle cell anemia next answer tha tame jaldi kuo zoology friends please answer this question if you know zoology question friends fruit fly Drosophila completes its life cycle in the answer is 7 days Drosophila completes its life cycle in 7 days who Correct, is the sir. scientist who used Drosophila for his genetic experiments Morgan, sir. Morgan, very good. Now he got Nobel Prize for his chromosomal theory of heredity confirmation. Bateson and Punnett gave it, but confirmation was given by Morgan. Acha. Ebe. Ebe dekho, next question. This question is already set in examination. PMT, pre-medical test. Answer the question. The segregation. Segregation. A na, B na, C na, D. The B. 3:1 ratio, sir. 3:1. प्रथमे मते गोटे आंसर को 3:1 कहलो जे चिंता करो इटा डाइहाइब्रिड ना मोनोहाइब्रिड Dihybrid, sir. डाइहाइब्रिड हेले तो 3:1 हेई परिबोनी हेला डाइहाइब्रिड रे 3:1 हेई परिबोनी ए हबो सेटा तो डाइहाइब्रिड किंतु प्रथम लाइन टा क्वेश्चन रो पढो parental type अधिका हबो higher number of parental types right C हबो आंसर काई की ना Mendel's laws are valid only when genes are located on homologous chromosome and are on separate chromosomes, not on the same chromosome. Here, the R and Y are located on the same chromosome. If they are on the same chromosome, they can be separated only when there is crossing over, because they are linked. They are linked with each other, and they can be separated only when there is crossing over. So crossing over is less if linkage is more. The statement that located very close indicates that they are closely linked. So closely linked means recombination chances or crossover chances are less. So there cannot be higher number of recombinant types, but there can be higher number of parental types.
parental types are higher. That is the answer. Because of linkage and less crossing over, since the genes are located on the same chromosome. The next question is very, very important for your knowledge. You must know this if you are teaching genetics at any level. Any idea about this? No, sir. No idea. Okay, carefully listen to me. नहले बुझिबाटा टिके इटा मुश्किल हो. अच्छा, आमे वाइल्ड जीन कथा चिंता कले ना नहीं? चिंता कले वाइल्ड जीन डोमिनेंट ना रिसेसिव ना किछि भी नही पारे, डोमिनेंट भी नो, रिसेसिव भी नो. जेतोळे पर्यंत तार म्यूटेशन हेइनी. हला वाइल्ड जीन रो जेनेटिक्स रे गोटे सिंबल अछि. एनीवन हु नोज इट? Anyone who knows what is the symbol used for a wild gene when it is not Plus. mutated? Plus. Very, Plus. very good. Plus is the sign. Plus is the sign for wild gene. So wild gene is plus. Acha. Wild gene ta tamaro mutation habo. Mutation jetebale habo se mutation ta jo mutated gene ta डोमिनेंट हबो ना रिसेसिव हबो ना कोटा हेले भी यही पारे. जेतबेले म्यूटेशन हबो म्यूटेटेड जीन टा डोमिनेंट हबो ना रिसेसिव हबो ना कोटा हेले भी यही पारे. जोटा हेले भी यही पारे. सेथिबे मु कहिथिली the mutation may be towards a dominant gene or it may be towards a recessive gene. Hela mutation ta towards a dominant gene or a recessive gene. Mone karo gote dominant gene. अच्छा एठी जो आमे चारटा सिंबल देखुछु से चारटा सिंबल तमे मते कुओ से चारटा सिंबल तुमको कौन देखो जी एठी? आई एम सॉरी. हाँ, चारटा सिंबल रे डोमिनेंट कोटा कैपिटल वी ना स्मॉल वी डोमिनेंट? ना नहीं कोटा डोमिनेंट कैपिटल वी ना स्मॉल वी? कैपिटल वी. कैपिटल वी इज डोमिनेंट. एठी प्लस साइन की माइनस प्लस साइन नहीं. अच्छा, small v is recessive. That is very clear. A and B are very clear. Next कौन लिखा है जी? Small v plus and capital V plus. तार माने टा कौन? एतिकी बुझिगले तमरे. एतिकी बुझिगले तमे आंसर टा जानी दिगो. अच्छा, plus is the sign for what? Plus is the sign for wild gene. Wild gene. आमे आउरी जानिले जे वाइल्ड जीन टा म्यूटेशन जेतबेले हबो सेटा गोटे डोमिनेंट जीन हेई पारे किंबा रिसेसिव जीन हेई पारे. जेतेबेले म्यूटेशन टा गोटे डोमिनेंट जीन को फॉर्म करिवो सेटा या भितर गोटे सिंबल अछि जोटा के सेटा देखेबो. कोटा कहलो? कैपिटल V प्लस. कैपिटल V प्लस. जदि म्यूटेशन टा रिसेसिव जीन हबो ताले को सिंबल देखेबो? स्मॉल v. स्मॉल v प्लस. बुझियला ना नहीं? बुझियला जदि कैपिटल V प्लस देखा जाउची देखिलो तमे ता अर्थटा कोन बुझौची तुमको? डोमिनेंट कैरेक्टर म्यूटेड. डोमिनेंट कैरेक्टर म्यूटेड. डोमिनेंट ता रिसेसिव थिला ना डोमिनेंट थिला? ए जो कैरेक्टर ता रिसेसिव थिला ना डोमिनेंट थिला?
डोमिनेंट थिला सर dominant ना ना region. ना ना कैपिटल V apa प्लस जदी हला वाइल्ड टा कोन थिला कैपिटल V प्लस रे वाइल्ड टा कोन थिला Lohan. टिके कूलली चिंता करो एठी मॉडिफाइड जीन होची म्यूटेटेड जीन होची डोमिनेंट ताहले वाइल्ड जीन टा कोन if recessive mutated gene is dominant wild gene टा कोन Recessive. recessive if mutated gene is recessive wild gene टा कोन Dominant. Dominant? डोमिनेंट ताहले ड्रोसोफिला रे मते कुओ वेस्टिजियल विंग टा डोमिनेंट ना रिसेसिव Recessive. रिसेसिव आंसर टा कोटा मते कुओ तापरे आवतरे तरे Small v plus. स्मॉल v प्लस ताले एटा होची तमर रिसेसिव जीन आ तार वाइल्ड जीन टा कोन तुमको इमेजिन करियो पड़ियो v प्लस स्मॉल v प्लस जदी वेस्टिजियल है कि रिसेसिव हला स्मॉल v तार वाइल्ड जीन टा कोन हबो वाइल्ड जीन टा कोन नॉर्मल विंग वेस्टिजियल विंग इज स्मॉल v प्लस और प्लस होची नॉर्मल विंग्स Wing. जदी V प्लस म्यूटेशन नहीं था ताहले कैपिटल V प्लस ताहले डोमिनेंट टा होची V प्लस और वाइल्ड जीन टा होची ए क्षेत्र रे रिसेसिव रिसेसिव टा जदी डोमिनेंट नहीं था ताहले कैपिटल V प्लस नहीं था जदी रिसेसिव डोमिनेंट टा रिसेसिव हला सेति पई स्मॉल v प्लस हला व्हिच इज a vestigial wing so answer टा इटी कोन small v plus Plus. which is a vestigial wing I hope the zoology friends know it and if they do not know if they are paying any attention they can also understand it अच्छा एटा भल्ले कि तमे आउथर स्टडी कले बुझि देई परिबो हियर आउ बेसी टाइम नाही आओ नेक्स्ट क्वेश्चन टा वी हैव ऑलरेडी आंसर्ड ऊपर क्वेश्चन टा छाड़ दियो सेकंड को आसो सेकंड क्वेश्चन Punnett square. कोऑर्डिनेट स्क्वायर सर Punnett square how kiye anyone the answer is fourth line last class रे एते समय नै कि मु बतैली जे फोर्थ लाइन रे तमे जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो इजीली जानि परिबो 1:1 2:4 1:1 हां ताको मल्टीप्लाई करके फोर्थ लाइन रे इजीली जानि परिबो दैट इज फोर्थ लाइन इज द आंसर नेक्स्ट इटा एम्स रे पड़तिला क्वेश्चन number of genes with enzyme जानना सर अच्छा मत गोटे कथा कहल तमे जो जेनेटिक्स पढ़ुतलो पीजी रे को बही फॉलो करथुलो जणे दी जणे मते को रेफरेंस बुक कह दियो टेक्स्ट बुक कहया दरकार नहीं मु जानि परछु टेक्स्ट बुक कोन कोन पढ़थुबो हां
रेफरेंस बुक कौन बही पढ़ुल गोटे जोटा हेले शुणिच गोटे भल बहीर ना कह दियो हाँ जोटा बहुत फेमसली यूज हुए पीजी लेवल रे को बही सेटा हाउ तमे हुए तो पढ़ी नथिबो मु कह दिए इट इज स्ट्रिक बर्गर बही जदि तमे देखिछो किंबा केतेबेले सुजोग मिलले देखो सेतरे कोनोसी जगह रे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर ए सब यूज होइनी केवल प्लस इज यूज्ड एंड दी v plus ए भलिया so wild and mutated genes सेतरे यूज होइछि okay forget about it now crossing over मपा जाए by crossover value माने which is usually measured in percentage केते परसेंट नुआ बारला मने करो गोटे क्रॉस रे एतिकी परसेंट राउंड येलो wrinkled green now राउंड येलो wrinkled green नॉर्मल थिला ताकू सबु क्रॉस कला को सबु राउंड येलो हला ताकू सेल्फ करिवारु 9331 नो आस्करी अलगा रेशियो आसला ताले राउंड येलो wrinkled green जदि अछि तमरो ओरिजिनल राउंड ग्रीन एंड wrinkled येलो राउंड ग्रीन केतटा बाहला तार परसेंट केते दैट इज द क्रॉसओवर वैल्यू सही बोली wrinkled येलो केतटा बाहला टोटल रु तार परसेंट दैट इज क्रॉसओवर वैल्यू सो डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स जोटी क्रॉसओवर वैल्यू बेसी आसबो सेठी डिस्टेंस दूर क्रॉसओवर वैल्यू कम आसिले डिस्टेंस ता पाख जदि क्रॉसओवर वैल्यू बेसी जीन गुडा को दूर रे अछंती आ क्रॉसओवर वैल्यू जदि कम आसिला ताले जीन गुडा को पाकरे अछंती नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िकर को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पॉलीजेनिक वेरी गुड हाँ इट इज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन please are you teachers I am ashamed are you teachers I wish that the type of teachers some of you are your children should get that type of teachers so that they can become IAS officers and very big scientists and doctors and engineers. If you cannot conduct yourself, what you will teach to students? I'm sorry, I normally do not lose my cool, but what is this? In my entire career, this is the only 2 classes where I am getting very least response. I fail to understand what is wrong with me. And you even forget to switch off the mic and talk among yourselves. If you are not interested, at least switch off the mic and be there. You switch on the mic, talk among yourself in your family, your friends and other things. And at least those few teachers who are interested, you are also disturbing them. Please learn these things. And for your children, you go to Akash Institute, other institute to make them doctors and engineers.
but you cannot conduct yourself as a teacher. It is very unfortunate. So let's come back. Which is correct about traits chosen by Mendel? The Sita. Right, Sita. बेसी आ समय दे परिवानी गोटे परे गोटे चलिवा. Mendel's law of independent assortment holds good for genes situated on the कौन Mendel's law of independent assortment holds good for the genes present on the So homologous chromosome. homologous na non-homologous. Homologous chromosome. Non-homologous chromosomes. काहे की कहलो independent chromosome रहेले ही से माने independently assort. अच्छा P रो chromosome number केते कहलो केतरा पेयर P plant रे केतरा पेयर P रे chromosome number केते हाँ chromosome number केते P रो कोई परियोनी any one 14 sir. केते पेयर हाँ 7 14 7 very 7 good pairs. 7 pairs आउ से जो सातटा कैरेक्टर नहीं थिले सातटा जाको कैरेक्टर सातटा अलगा अलगा क्रोमोसोम्स रे थिले सेति पई तांकर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ता हला जदि से माने अलगा अलगा क्रोमोसोम रे नथांते ताले से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आनी पारि नथांते मो आगुरु गोटे क्वेश्चन रे कहली से गुडाए कैरेक्टर रे आरंभ करथिले केवल सातटा को पहुंचले काहे की ना सातटा क्रोमोसोम रे तांकर सही रिजल्ट आसला जेहेतु से सातटा जाको कैरेक्टर अलगा अलगा क्रोमोसोम रे थिला नेक्स्ट इट इज वेरी इजी Incomplete dominance. complete dominance very good next नोबेल प्राइज किए पाइथिले Morgan. The answer is Morgan. If I remember correctly, he got the Nobel Prize in 1936. Sutton and Bovary khali kohithile je they are arranged on the chromosome, but it was experimentally proved by Morgan using Drosophila. Drosophila was the material that was used by Morgan. Now next is very simple question, but maybe tricky. Next question ta kona last D rahuche phenotype 4 genotype 9.
कहि परिबो आंसर डी सर वेरी गुड आंसर इज डी केमती चारिटा फिनोटाइप कोन 9331 चारटा फिनोटाइप 9331 चारटा फिनोटाइप केतुरा जीनोटाइप नोटा केमती 121 242 121 121 तीनटा 242 तीनटा 121 तीनटा 3 plus 3 plus 3 is 9 this is the way very good next Pleiotropy. प्लियोट्रोपी pleiotropy very good Pleiotropy. next कौनटा सर डी then All the recombination All frequency of the above. crossover All of the above, sir. all the above तीनटा जाको समान and I told you already that it is used in percentage next is very important Morgan unit. Morgan unit very good and it is also called centimorgan centimorgan तब ऊपरटा आंसर करो सभा तळटा छाड़ दियो ऊपर दुईटा आंसर करो तीनटा सर तीनटा वेरी गुड तमे काउंट करके देख परिबो तीन नाउ नेक्स्ट the location of pod location of pod is right answer next the seed answer Qualitative or quantitative? polygenic inheritance Yes, sir. is quantitative because माने गोटे वाइल्ड रेंज ऑफ माने वेरिएशंस आछो जोटा कि टिके स्किन कलर इन ह्यूमंस इज पॉलीजेनिक कैरेक्टर आउ पेरिकार्प कलर इन व्हीट इज पॉलीजेनिक व्हीट पेरिकार्प कलर इज द प्लांट एग्जांपल ऑफ polygenic characters polygenic character is mostly quantitative it's not qualitative next sir 25%. Right. 25%. 3:1. Hela. Percentage of pure homozygous individual in F1 generation is 25% or 50%? Tell me. अच्छा मोनोहाइब्रिड क्रॉसर रेशियो केते 3:1 3:1 जीनोटिपिक रेशियो केते 1:2:1 1:2:1 1:2:1 तादर 1 टा कोन 1 टाला होमोजाइगस प्योर टॉल प्योर होमोजाइगस टॉल आउ आरो 1 टा कोन होमोजाइगस ड्वार्फ क्वेश्चन कोन 2 प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल 50%. देखो आमे तो ए भलिया होचो तमे भी नुहो मु भी एमती हुए एटा जो आमे आंसर करिया रे ये करचो मु देखिछि बहुत पिला को
से माने एंट्रेंस एग्जामिनेशन रे ये रे आंसर करके पूरा कॉन्फिडेंट थिबे जे मु जहा आंसर करछि ठीक करछि किंतु गुडाए क्वेश्चन मिसलीडिंग थिबो से पचारला होमोजाइगस इंडिविजुअल आमर संगे संगे मन पड़ जीवो 3:1 सो होमोजाइगस इंडिविजुअल 25% किंतु इट इज 50% एगुडा को पिला को तमे सिखेबो वेदर you teach them personally or in the class you learn them make them learn Prophase 1 in meiosis. Meiosis, prophase 1. prophase 1 in meiosis हला को स्टेज रे लेप्टोटीन जाइगोटीन Pakitin. sir. पैकेटिन very good Angstrom. आंसर मु ऑलरेडी कहि दै छी Percent. right it is percent of crossing over केते परसेंट रिकॉम्बिनेशंस बाहरिले सेटा होची आंसर अच्छा बॉम्बे फिनोटाइप सुनिछ हाँ सर. हां बॉम्बे फिनोटाइप ता एथरे टाइम वेस्ट नबानी बॉम्बे फिनोटाइप इज मोर क्लोजर टू ओ काहेकि माने इठी एरो जो ग्लूकोजामिन की माने जो सुगर दीटा हुए ए द्वारा और बी द्वारा सेटा एथरे हुए नी एचएच अन्य टाइप रो गुटे प्रोटीन हुए नाउ सेठी पई you can say that it is more closer to O but it is not compatible to any of these next एटा देखिवा केते दूर आंसर करि पर कोटा आंसर कौन 50%. a couple has 50%. कौन 50% right always the chance of a son or daughter is 50% only fine एबे केतरा स्किप करी करी जीवा अच्छा लास्ट क्वेश्चन टा इथे आंसर करो आया को मन भी रखो
कौन टा आंसर? कहि परियोनी मु कहि दउची आंसर होची डी लास्ट क्वेश्चन रो आंसर होची डी एक्चुअल रेशियो मेंडल जो आस्तिला जो डायहाइब्रिड क्रॉस रे 9.8 3.2 3.4 1 ताकू से अप्रोक्सीमेट करिकी कले 9331 that was the माने turning point of his discovery. Had he not done that 9331 ratio की किछि हमें आज भी जानी पार नथांदे से 9.8 को 9 कंसीडर कले 3.2 को 3 कले ठीक अछि 3.4 को 3 कले ठीक अछि किंतु 9.8 को से 10 न करिकी 9 कले. That was the brilliancy of Mendel's approximation 9.8 3.2 3.4 1 एबे अच्छा एगुडा सब आमे करि देइछे. हाँ लास्ट क्वेश्चन 8 Last question. How many types of gametes can be produced by a diploid organism who is heterozygous for 4 loci? Go jaldi. Sir, बोले 16 हाँ 16 केमती बाहरला sir 4 different हाँ 4 माने 4 heterozygous sir producer 4 loci. सुनो तार आंसर सेमिति नुओ 2 to the power n minus x 2 to the power n टा केते इठी केतरा पेयर ऑफ जीन्स 4 माइनस Four. केते 4 माइनस 0 होमोजाइगोसिटी किछि अछि कि 0 0 so 2 to the power 4 minus 0 केते आसीबो 2 to the 16. power 4 केते 16. 16 16 right. So I asked you to answer this question just to verify whether you are using that formula or not. So please use that formula so that there cannot be any mistake. अच्छा इटा तमे जानी छो but still then कहि दियो जल्दी. First step. Last D. Last D. De Vries, Correns and Chemark. Next, I will move very fast. Now, next second right answer column. Chromosome maps and genetics map were first prepared by
Sultan and Bobby. No, they said that genes are located on a chromosome. Sir, last one. Morgan gave the experimental proofs Last one, sir. and got the Nobel Prize. Morgan. Maps were created by whom? Anyone? Sturtevant. Sturtevant, 1911, was the man who first made genetic map by crossing over frequency or percent of crossing over. The distance between the genes is measured by map unit, which is centimorgan. Okay. Next. अच्छा, एक क्वेश्चन टा देख लो टॉप टा. कौन लिंकेज ପାଇଁ କୋଉଟା suitable? B. Huh? The suitable one is B. କାହିଁକି ନା B ରେ ସେମାନେ ओरिजिनल फॉर्म रे कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल A कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल B और स्मॉल b स्मॉल b अछंती सेमानकर जदि क्रॉसिंग ओवर हुए ताहले सेमाने कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल A स्मॉल b कैपिटल B स्मॉल a एकाठी आसीबे सेईटा जानिबा पई हमको एटा होची the best suitable experiment for law to know what is the extent of linkage. Next. And these first two questions here must be well answered by our zoology friends. Now, for both the cases, the answer is all of these. The first question, alkaptonuria, albinism, cystic fibrosis, these three are recessive autosomal genes. And the next three, polydactyly, Huntington disease, phenylthiocarbamide testing, all these are now they are the dominant mutations. We could have discussed, but there is no time to discuss all those things. Acha. एटा ऊपरटा कहलो
गैस मार की गैस मारले भूल हम अवश्य देखो Red. tyrosinase is the answer. Tyrosinase is responsible for melanin formation that gives us skin color. Now it amu delhi je to didi jagare padichi. Question. Not melaninase, it is tyrosinase. Tyrosinase যদি nahi তাহলে you will get albinism. हाँ ऊपर क्वेश्चन का आंसर करो. ऊपर क्वेश्चन आओ लास्ट क्वेश्चन ये दीटा आंसर करो. Chemists are never hide. Huh? B. Very good. Segregation. Segregation. Someone said, huh? Segregation. That's right. First one is segregation. That's why I said that this there is no law called law of purity of gamete or law of pairs of gametes. It is law of dominance, law of segregation, law of independent assortment. And this question was asked in AIMS examination. Now, 23 pairs of chromosomes in human can give rise to how many combinations? I am giving you the answer. It is 8.6 million. The formula is 2 to the power number of pairs. 2 to the power number of pairs. Now you will get 8.6 million if you calculate 2 to the power 23. That is the answer. Remember this. Any number of pairs. 10 pairs 2 to the power 10. 7 pairs 2 to the power 10. That is the number of combinations. Second question to answer karo. Second and third. Second question, I am giving you the answer. The answer is Colreuter. I told you, Colreuter was the first person to start these experiments, and he has also worked with tobacco plants. And the third question answer is genes located on the same chromosome. That is the answer. If they are present on the same chromosome, then they are linked and there cannot be independent assortment. So A is the answer. I gave this question because it is set in CBSE exam. This is also a CBSE question, first one. Answer that one.
C, sir, starch branching enzyme. First question, the answer is starch branching enzyme. I told you that wrinkled seeds are formed because of less formation of starch. And here the mutated gene is modified. And here the starch branching enzyme is absent. So when starch branching enzyme is absent, starch is not formed properly. That's why you get less starch and the seeds become wrinkled. Now, answer the last question. I am asking you this because it is set in Orissa JE. Last question, and that will be the last question for today's class also, because you are already 11 and you will take 15 minutes gap, and my friend who will take your next class has already come. He is also my classmate. The answer to the last question is A, because polygenic character is controlled by multiple genes, not multiple alleles. Thank you very much. Wish you all the best. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Now, one more thing, you can note my phone number 88951 88951 44667 8894 88951 88951 44667. Any doubt and any question, not only genetics, anything, you can WhatsApp to this number 88951 44667. And I hope you remember my name, K. Vijay Kumar. Okay, thank you very much. Well, Great teacher.
Welcome, friends. I am B.K. Chaudhary. Professor Vijay Kumar might have told about me.
my task is to discuss some multiple choice question. At the beginning, I should tell you what sort of this MCQ, multiple choice questions may come, usually comes in the exams. One is question mark question. For example, which is not a symptom of microbial infection, like converts milk to curd, decomposer, causes infections. Just I am giving an example. Like this, 4 multiple choices will be given. That is one sort of type. Another is multiple choice question, maybe completion type questions, like the characteristic of living organism is respiration, response to stimuli, reproduction, internal environment remains constant. Like that, you have to choose the answer. This may be another type of multiple choice question. Maybe another type of question nowadays being asked, which is a correct statement. For example, 4 statements will be given. The candidate has to choose which one is a correct statement. Another type of question may be find the correct order. For example, in the ascending order on the thalamus of flower, what are the organs in the ascending order on the thalamus of the flower? Calyx, corolla, androecium, gynoecium, maybe it is being shuffled, A, B, C, D is given. That may be a type of question. Like this, I have set certain questions from chapter reproduction in flowering plants. So these are the 4-5 types of questions, multiple choice questions are being asked in the CBSE exam. I have prepared some questions. Maybe from the syllabus, only from your book. This is your book. This biology book. And from this book, I have, from that chapter, I have selected certain points and set questions. For example, nearly 55 to 60 questions I have prepared. We'll discuss in these 2 hours. This thing, these 55 questions. That is sexual reproduction in flowering plants. That is the topic. Sexual reproduction means sexual reproduction is a process by which always 2 reproductive units are being produced. One is male gamete, another is a female gamete. So first question is, the end product of sexual reproduction in flowering plants are, end products of sexual reproduction in flowering plants are gametes, spores, seeds, sporocarps. End product. So these are the 4 choices. Always choices should be like this. Never given none of the above or all of the above. That is not given. Never to be set in the exam. So this is a very simple question. The end products of sexual reproduction in flowering plants are when 2 gametes fuse. Fusion product is known as the zygote. Zygote is the post-fertilized product. So that is the answer. End products of sexual reproduction in flowering plants are zygote. I have not written. So that is in place of seeds you write zygote. That is zygote. Seeds may be confusing, maybe zygotes. Which are 2, another question, which are the 2 important units of sexual units of sex of a flower? Which are 2 important sexual units of a flower? 2 sexual units, calyx and corolla. Corolla and androecium, corolla and gynoecium, androecium and gynoecium.
Which one is the correct answer? Which are the two important sexual reproductive units of a flower? Calyx and corolla. The calyx and corolla in a flower, you know, flower has 4 holes on a thalamus. 4 holes are in the ascending order: calyx, corolla, androecium, gynoecium are there, and this androecium and gynoecium respectively bear the male and female reproductive units. Calyx and corolla are accessory holes. It is called as, those are known as the essential holes. So androecium, gynoecium are the correct is the correct answer. They are the important sexual reproductive units of a flower. The innermost wall layer of a microsporangium is microsporangium. In your syllabus, in the syllabus of this sexual reproduction in flowers, there are six parts. I have taken down. There are 6 parts in this book. One is flower, a fascinating organ. Second is pre-pollination, structure and events. The pistil, megasporangium and embryo sac, pollination, seed, apomixis, polyembryony. In this way, the charity unit achi, charity part achi. Flower, a fascinating organ. That is, what is flower? Flower is a modified shoot. That is a part of a shoot system. You know, from when seed germinates, from the plumule, the shoot system comes up, and shoot produces bears, nodes, internodes, leaves, flowers, fruits, etc. And root system develops, terminates with root cap, and there are 3-4 zones like zone of cell division, zone of elongation, zone of maturation. Root ram the chatta zone there, zone of maturation, root air barte, and that those root hairs are the observing organs of water for the plants. So that is root hoji the plant ko stability and new nourishment provide karibo. Shoot system, all other functions like reproduction, photosynthesis, all activities will be. So flower is a modified shoot of determinate growth. Indeterminate, it is not an internode. It is a shortened. Internodes are very short in a flower. So flowers are parts of shoot system of determinate growth, which bears certain holes like calyx, corolla, androecium, gynoecium. Chatta hole mainly kete jagare calyx, corolla modify jayte, kete jagare unisexual flower thae, kete mainly bisexual flower हम discuss करूँ. So the various ways what a flower को देखले. So first part of the flower a fascinating organ. Second part of the pre-pollination, structure and events. Pre-pollination means whatever development that takes place in the stamen, that is in the microsporiogenesis, etc. Pistil, megasporangium, embryo sac, pollination, seed, apomixis and polyembryony. एमती 6टा पार्ट अछि से बही रे जो कोर्स रे अछि हमर जो ओडिया सिलेबस रे सेटा टिके बेसी डेटा लाइब्रेरी एटा भारी सिंथेटिक 10 कोडी पेज माने नियरली 10-12 पेज भीतर सरी जाई 20 पेज केबे नुहे 12-14 पेज भीतर सरीची छुटिया पार्टटा. सो आदरु क्वेश्चन हमर पिला को डिस्क्राइब करा जाय गोटे क्वेश्चन मु देइची सेति में इनर मोस्ट wall layer of microsporangium is the site where microsporogenesis occurs. Stamen no what is stamen? And androecium ro individual members are known as the stamens. Androecium is the male reproductive unit, organ. Male reproductive unit organ individual unit ki कहती stamen. Stamen no dita part अछि
filament and anther. Anther रे जो ये अच्छी चारिटा लोब जेतेबेले माइक्रोस्पोरोजिनेसिस और माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन हबो सेतेबेले चारटा लोब हबो and there the microsporangium will develop. Microsporangium formation habo. So the innermost layer of microsporangium गोटे के जेतेबेले माइक्रोस्पोरोजिनेसिस होचे एते डिस्क्रिप्शन नाही हम सीएचएससी रे अच्छी जे डिस्क्रिप्शन माइक्रोस्पोरोजिनेसिस रे केमिति हुए माइक्रोस्पोरोजिनेसिस starts from a fertile cell that is called Archisporial cell. Archisporial cell. Right, that is called archisporial cell. Archisporial cell divides periclinally. Inner layer is known as the Sporogenous tissue. Microspore initial part and initials. Microspore initial wall initial divide करी पांचटा लेयर हबो एपिडर्मिस ता तळगु रहबो एंडोथेसियम ता तळगु रहबो टू लेयर्स ऑफ मिडिल लेयर्स इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज द टैपेटम तार दीटा लेयर पिला मानको आपण माने कहबे दीटा लेयर सिग्निफिकेंस अछि एपिडर्मिस इज द प्रोटेक्टिव ऑर्गन नो डाउट एपिडर्मिस सब जगह प्रोटेक्शन किंतु ता तळगु जो एंडोथेसियम अछि एंडोथेसियम हेल्प्स इन द dissemination of the pollination से pollen गुड़ा को disperse करिया पई that helps that is fibrous the walls of endothelial walls are fibrous so fiber जतले liquid absorb करिवो से ताको खोली जीवो spores will be liberated so for the liberation of spores endothelium is a single layered structure that helps in the dissemination of the spores, microspores, and tapetum. Tapetum is the innermost layer. Tapetum is that is the nourishing layer. Tapetum is the nourishing layer. So, this data layer pila gote कहबे significant सेतिबे मु गोटे क्वेश्चन पचारि दिछि the innermost wall layer of microsporangium is endothelium, tapetum, epidermis, endodermis. So, like this I have said question. So, answer will be tapetum. Which one is responsible for nutrition of developing pollens? Which one is responsible for nutrition of the developing pollens? Tapetum, endodermis, epidermis, columella. Like this, 4 choices are given. So that is no doubt tapetum. Tapetum. Which one is the last cell of the male sporophytic generation? Male sporophytic generation. Choice दे देले जे मैंने जानी है जो मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर which one is correct answer A हला मेगास्पोर मदर सेल B हला मेगास्पोर C हला माइक्रोस्पोर मदर सेल D हला माइक्रोस्पोर which one is the last cell of the male sporophytic generation. Last cell of the male sporophytic generation. Which one? Microspore mother cell. Yes, microspore. C is the microspore mother cell is the answer. Because mother cell is the last cell always. Last cell is mother cell. First cell is the spore. Microspore or megaspore. Always first cell of the gametophytic generation is the microspore or megaspore. Spore is the first cell of the gametophytic generation, mother cell is the last cell of the sporophytic generation. So zygote is the first cell of the sporophytic generation. Always zygote is the first cell of the sporophytic generation, which is not applicable for sporopollenin. Sporopollenin. Sporopollenin code hai. Sporopollenin that is present in the exine layer. Present in the exine layer. Microspore wall, spore wall, pollen wall, inner layer, the endothecium, that is called inner layer. There are two layered wall. A pollen has two layered wall, and in the outer wall,
there is deposition of sporopollenin. So which is not applicable for sporopollenin? Dominant component of the pollen wall can be degraded by enzymes, cannot be degraded by enzymes. Helps in the pollen grains for to be preserved as fossils. Sporopollenin एते गुडा काम करे जो माने microspore wall जो pollen wall, microspore means pollen can be technically called as the microspore because pollen is the haploid male gamete. From that male gamete is produced, that is the haploid. Pollen is otherwise called as the microspore, technically called as the microspore, and microspore wall dita layer achi, inner wall and outer wall. Outer wall is made up of sporopollenin. Major component is sporopollenin. That is not extensible, but there are gaps. That is called the germ pores. That is called the pores through which pollen tubes come out. So dominant component of the pollen wall, yes, sporopollenin is the dominant component of the pollen wall. Can be degraded by enzymes? No, it cannot be degraded by enzymes. Cannot be degraded by enzymes, that is correct. And also because of that, pollen is being preserved because it is not easily decomposed by enzymatic action. So that's why it is preserved for a longer, can be preserved for a longer duration. So fossil जो pollen मिले से fossil pollen ने तार wall ले sporopollen थिबारु outer wall ले exine. Outer wall is called as the exine, inner wall is called as the intine, and that exine major component of the pura nuhe. Major component is sporopollenin, which cannot be degraded by enzymes, and that's why it can be preserved for a long duration. So eta ye bohire bi achi NCERT bohire bi se lekha aichi tenu eta mu jama e bohiru amo bohiru mane council bohiru kichi question set kari nai pray kari nai ayadare 7 number question, which one is different from other three? एमिति अभी क्वेश्चन MCQ पढ़ो, which one is different from other three? Microspore, pollen grain, sperm, anther. Microspore mark करंतु. Which one is different from other three? Microspore, pollen grain, sperm, anther. Anther. Sperm na. Anther. एमते गोटे क्वेश्चन एथरो मैट्रिकुलेशन पढ़ीला Anther. से सार माने कंडक्टिंग बोर्ड को आसिले मते चैलेंज कले आमे कहे जे व्हिच वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री कोन से एस्पेक्ट रे स्पर्म यू कैन से स्पर्म इज फॉर एनिमल्स सो एटा प्लांट केस रे सब गुडा प्लांट रो एनिमल नो एले स्पर्म इज हैप्लॉइड पोलन इज हैप्लॉइड हाउ कैन इट बी डिफरेंट गोटा केस रे त आमे हां से होची ये तीनटा कहूची प्लांट रो से गोटा कहूची एनिमल से गोटे एस्पेक्ट रे इट इज डिफरेंट बट आमे आउ जण कहबो नाही ये त अपलोड से त अपलोड केम देबो सम एमते गोटे क्वेश्चन माने सिमिलर मु ए क्वेश्चन टा नुहे अन्य गोटे एमते पढितला मते से माने तांको कंडक्टिंग बोर्ड रे मते पचारले मु कहली नाही जोटा ठीक आंसर मु कहली एटा दैट इज द ठीक माने करेक्ट आंसर कहले नाही सर एटा ये छि आपण ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स कहितले इतना मु कहली सब कथा कुआ जाय ना एमसीक्यू सब लागो ठीक बढिया किंतु ये गोटी एस्पेक्ट रे देखिबे लोअर प्लांट रे हम स्पर्म भी कहू लोअर प्लांट रे आमे सिना एंजियोस्पर्म रे कहूने लोअर प्लांट रे स्पर्म कहू तेणु एनिमल रे कहू स्पर्म हां अपलोड बट लोअर प्लांट रे भी स्पर्म कहा जाए इवन जिम्नोस्पर्म केस रे भी स्पर्म कहा जाए तेणु ये रे देखिबा जदी आंथर व्हाट इज आंथर इज डिप्लॉयड आंथर इज डिप्लॉयड बट माइक्रोस्पोर इज हैप्लॉयड आपण कोंतु को एस्पेक्ट रे ताको अलगा करिवे को एस्पेक्ट रे गोटे को पॉइंट रे कहबे नाही एटा मु गोटे पॉइंट कहूची ये होची ये तीनटा होची हैप्लॉयड
सेटा होची डिप्लॉयड आंथर होची डिप्लॉयड आंथर सेल इज डिप्लॉयड so आंथर is the answer which one is different from other three which is not the characteristic of vegetative cell of pollen grains which is not a characteristic of vegetative which is not the characteristic of vegetative cell of the pollen grain. Pollen grain na dita cell achi. Pollen grain na dita cell achi. The two cell stage pollen grain tube cell generative cell. Dita cell achi tube cell generative cell. So which one is not the characteristic of vegetative cell of pollen grain? Carriage male gametes. B. Abundant reserve food. Large irregular shaped nucleus. It is bigger. Which one is not the characteristic of vegetative cell of pollen grain? Carries male gametes, abundant in reserve food, large irregular shaped nucleus, and it is bigger. So our answer of abundant reserve food, other food vishesh not hai, reserve food material not hai. That's why it grows and carries the male gametes along with it. It carries the male gametes. Dita male gamete to carry kala here angiosperm flowering plant re large irregular shaped nucleus achi. It is big structure. It grows from the stigma to the egg apparatus and embryo sac. The part so ei part ta gala micro second part achi pre-pollination structure and events. Structure and events. Pre-pollination structure होची या जे गोटे flower रो जो androecium रो individual members of androecium are known as the stamens. Stamens has two parts. Filament is the stalk of the stamen, and anther. On the anther there are the microsporangia. Charita microsporangia charta year develop करे microsporangium रो microsporogenesis, microspore development हुए, archisporial cell divides periclinally, outer and inner wall initial and the microspore initial, wall initial redivides from the wall layers, outer epidermis, endothecium, middle layers, endothecium, inner redivides, at last form the microspore mother cell. Microspore mother cell undergoes reduction division, produces microspore tetrad. Microspore tetrads are arranged in different fashions. That may be tetrahedral is typical type, maybe linear, maybe T-shaped, maybe inverted T-shaped. There are different types of arrangement of the microspore tetrads. Microspore tetrad each microspore tetrads contain one microspore nucleus, and that develops from that the pollens are being formed. Tapare pollen structure, pollen pollination. So that is about the pre-pollination changes. Then we will come to the question from the megasporangium. Megasporangium re lekha hai chapter achi the pistil, megasporangium and embryos of pistil. Pistil is otherwise called as the gynoecium. Gynoecium, individual members of the gynoecium are known as the carpels. Carpels have three parts. Carpels have three parts: ovary, style, stigma. Ovary, style, stigma. Ovary ovary भितरे ovule थाए. Ovule जो attachment करिथाए ताको कहंती placentation. Attachment of the ovule to the ovary wall is known as the placentation. Placentation विभिन्न type रो अछि सेउडा सब CHSC बहिरो अछि like marginal,
free central, parietal, axial, एमती केते रकम अच्छी फॉर एग्जांपल आपण माने मोटर सीट को खोली दिबे ओटा पिला को प्लासेंटेशन देखेबे केमती प्लासेंटेशन देखे मोटर मंजीटा को छड़ेइले मंजीटा जेमती लागी छी से कोडी लागी छी से मार्जिन की धार को लागी छी so that type of placentation is known as the marginal that is the marginal placentation margin की लागी छी सेतबे marginal ता ना सेमती parietal peripheral लागी छी parietal central center रे लागी थिले से central सेंटर रे फ्री हेगिरथिले फ्री सेंट्रल एक्सिस रे लागथिले एक्साइल एंता केते रकम रो प्लासेंटेशन अछि प्लासेंटेशन मीन्स अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल टू द ओवरी वॉल तो प्रथम क्वेश्चन होची द पार्ट ऑफ द कार्पेल दैट रिसीव्स पोलन ग्रेन्स हां मु कहउतली कार्पेल तीनटा पार्ट अछि ओवरी स्टाइल स्टॉक ऑफ द कार्पेल इज नोन एज द स्टाइल तार स्टॉक टाउ कहते नाड़ टाउ कहते कार्पेल जो स्टाइल एंड स्टिग्मा इज द रिसेप्टिव पार्ट टॉप पोर्शन ये तीनटा पार्ट रहिला this is the stigma এটা হলো স্টাইল এটা হলো ओवरी ভিতরে ওভিউলস होता है like this so style either say question होची say the part of the carpel that receives pollen grains is called ovary ovule stigma style ताऊ कोन कहंती ओवरी कहंती ओव्यूल कहंती स्टिग्मा स्टाइल so it is stigma which are called ovules का को में ovule कहबा microsporangia megasporangia ovary Microsporangia. which one are called ovules ovule ko otherwise megasporangia microsporangia is the male part and ovule is the megasporangium is otherwise known as the ovules so which are called ovules इटी मु भाबुची ओवरी टा देले हबनी आ गोटा कोन देखिबे एमते क्वेश्चन करिवे जतले पिला को आपण दउचंती ओवरी देले व्हिच आर कॉल्ड ओव्यूल्स ओवरी कहले हबनी आ गोटा कोन देबे एमतिका लाइक न्यूसेलस better to give nucellus ovule structure केमतिका एटा टिके जानिया कथा ovule angiosperm केस रे विभिन्न टाइप रो ovule अछि लाइक ऑर्थोट्रोपस अनाट्रोपस कैम्पाइलोस्ट्रोपस सर्सिनोट्रोपस हेमियानाट्रोपस एमति केते रकम रो अछि टिपिकल ओव्यूल आमे जो ओव्यूल पहला माने एंजियोस्पर्म केस रे देखुचंती दैट इज ऑलवेज अनाट्रोपस ओव्यूल ओटा ओव्यूल होची एमता स्ट्रक्चर तार दीटा इंटेगुमेंट थाए ओव्यूल ला स्टॉक दिस इज द स्टॉक ऑफ द ओव्यूल जोटा अटैच करूची ovule ovary wall को अटैच करती जोटी स्टॉक ऑफ द ovule is known as the funiculus funicle point of attachment is known as the hilum एटा कहते funiculus or funiculus the opening these are known as the integument there are two integuments so these are integuments two integuments are there and this opening is known as the सबुआडे कवर है जो जगह ओपनिंग तक कहंती माइक्रोपाइल main body of the ovule this is the main body of the ovule आको कोन कहबा nucellus
this is micropyle, the other end is known as the calaza. What a ovule structure is what a typical item, this is anatropous, inverted ovule. Orthotropous ovule is see the ovule straight, this is straight, this is inverted ovule. So ovule structure is like this. Ovule structure monorakondo ei uda part uda the stalk of the ovule is known as the funiculus. Stalk of the ovule is known as the funiculus. Point of attachment is known as the hilum. Point of attachment is known as the hilum. Ovule has two integuments. It is it envelops the nucellus all through, but at one end it is there is a say narrow opening that is called micropyle. The other part of the micropyle is known as the calaza, and main body of the ovule is known as the nucellus. And inside this ovule there is the embryo sac, and there are it is a 7-celled 8-nucleate structure. These are known as the antipodals. Embryo sac. This is known as the embryo sac. This is antipodal. This is central cell. Central cell. This is known as the egg apparatus. These are the two synergids. This is the egg cell. This structure ta janile structure ta jodi pila mane rakhi paribo tale double fertilization triple fusion describe kariare bhari sahaj habo kichi asubidha nai. So this structure boy re jadio detail mu jani nei achi kemti aji man nai moro but one should remember the structure of the ovule. Ovule structure is like this. Like this is a typical anatropous ovule. Auri bibhinna rakamar ovule hochi, bonka ovule hochi, eta sidha ovule, eta ollata ovule, auri horseshoe shaped ovule, bibhinna rakamar ovule hochi. Ovule is otherwise known as the megasporangium. Ovule is known as the megasporangium. Which of the following possess one-seeded ovules? One-seeded ovules. Karo gottae manji eko pala ovule hochi. Sera boy re mane CBSE NCERT boy re hochi. Wheat rice mango, wheat rice papaya, wheat mango orchids, rice mango watermelon. A vitru karo gottae laga manji hochi. को ग्रुप रो एटा मु जो कहतले चारि टाइप रो एगोटे टाइप रो क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग possess one seeded ovule कार गोटिए लेखा ओव्यूल अछि गोटे बी अछि व्हीट राइस मैंगो मु भाबुछि एटा ठीक व्हीट राइस पपेया माने पपेया तो फल भीतर बहुत मंजी थाए व्हीट मैंगो ऑर्किड्स व्हीट मैंगो गोटे ऑर्किड रे बेसी थाए राइस मैंगो वाटरमेलन ने बहुत रहिला तेणु व्हीट राइस मैंगो होची वन सीडेड ओव्यूल्स तो गोटे मंजी गोटे ये वन सीडेड ओव्यूल्स व्हिच इज द करेक्ट सीक्वेंस मु कहितले चार रकम ये गोटा करेक्ट व्हिच इज ए करेक्ट सीक्वेंस टिके मार्क करंदो थैलेमस व्हाट इज थैलेमस Thalamus is the structure over which all the flattened or hemispherical structure over which all the floral parts are born, floral structures are born. Thalamus, ovary, stigma and style. Thalamus, ovary, stigma and style. Thalamus, ovary, style, stigma, ovary, thalamus and style, ovary, thalamus and stigma. ये चार्टा दिया है जी खाली सफल करा है जी कोटा ठीक ऑर्डर थैलेमस is the platform
the structure over which floral holes are born. तारे गोटे thalamus उपरे thalamus गोटे इनके structure है तो hemispherical एंड गोटे raised structure है तो आरी उपरे गोटे carpel is born. Carpel is born तार go but अच्छी ovary style stigma. Ovary style stigma होती ठीक order ascending order ovary style stigma अपन जरी मिसी मसी कहबे हबनी तेणु जे करेक्ट सीक्वेंस देखेबे वो करेक्ट सीक्वेंस थैलामस ओवरी स्टाइल स्टिग्मा ये होची करेक्ट सीक्वेंस एमते सीक्वेंशियल क्वेश्चन पड़े मल्टीपल चॉइस टिके पिला को भाबिबा को पड़िबो व्हिच वन इज द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म व्हिच वन इज द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म चॉइस हला न्यूसेलस ovary ovule तो कहीं नोंती न्यूसेलस ovary ovule embryo sac दिथर न्यूसेलस ये अच्छा embryo sac कोटा आंसर बार बाबू अविनाश बाबू कड़े पळेले हां व्हिच वन इज द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म्स न्यूसेलस ओवरी ओव्यूल एम्ब्रियो सैक ovule एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट female gametophyte means haploid अभी तो न्यूसेलस haploid नुहे ovary haploid नुहे ovule haploid नुहे cells of ovule भीतर अच्छी embryo sac but all the cells are not haploid so embryo sac inside that ovule or you can say nucellus and तादरे गोटे embryo sac develop करती that is the female gametophyte. Synergids are part of antipodals. Synergids are part of antipodals. कार part कहिबे part of antipodals central cell egg apparatus polar nuclei. egg apparatus Synergids are part of antipodals central cell egg apparatus polar nuclei. egg apparatus yes ये चित्र तो दिया है चित्र जानिए जो तो पार्ट ऑफ egg apparatus एमते क्वेश्चन माने पिलाटा को ओटा खाली तारो येटा केते से मन रखी जी ताको टेस्ट करिया कथा filiform apparatus are special thickenings of antipodal cells. Synergids polar nuclei egg cell. Filiform apparatus synergids are special thickenings of antipodal cells. Synergids polar nuclei egg cell. Synergids right. Synergids से डायरेक्ट करे फिलिफॉर्म apparatus फिलिफॉर्म से नारु जणा पड़ची से जदी सिनर्जिड सेल टाको हमें टिके देखिबा भलो कि मैग्निफाइड व्यू देखिबा तादे एंती लीफ लाइक स्ट्रक्चर बाहर दिबो फिलिफॉर्म apparatus ता कोन दी फिलिफॉर्म apparatus फिली मींस जो लीफ लाइक पत्र भलिया apparatus सो सेमते बाहर दिबो से apparatus that apparatus directs the direction of pollen tubes. Directs filiform apparatus directs the direction of polar tubes towards the egg cell. Egg cell आड़ को से डायरेक्ट करूची ये जो pollen tube टा को डायरेक्ट करूची so it carries the male gametes. So male gamete आसियो बोली तार filiform apparatus काम होची that is present in the synergids. So that may be ताले egg apparatus रे काहे की रोईची
synergy, what is the function? So gote dita sentence ya question pade, for example question asla synergies pila kon likho dita sentence, two sentence. Synergies are gote point la synergies are part of ega apparatus. 1 2 ela it directs, you can write the it is an haploid cell. Third point above, it contains filiform apparatus which directs the direction of pollen tubes toward the egg cell. Question number 16. A typical embryo sac in angiosperm are 8 nucleate and 8 nucleate. 8 nucleus अछि. Kon hochi? Ha, megasporogenesis mu कहली. In megasporogenesis, microsporogenesis re microsporogenesis means microspore. Tara word meaning is sporogenesis. Genesis means formation. That is microspore formation. Microspore formation, microsporogenesis. Microspore formation. ये आरंभ होची आर्किस्पोरियल सेल लो. आर्किस्पोरियल सेल कैरेक्टरिस्टिक होची गोटे सेंटेंस आर्किस्पोरियल सेल मने करंतु पिलार पढिला गोटा क्वेश्चन आर्किस्पोरियल सेल. व्हाट इज आर्किस्पोरियल सेल? Archisporial cell is the cell from which microsporogenesis starts. 1 point. Now गोटे भारी ये point any boy, any book embryology boy देखिए लिखा है दिवो archisporial cell is differentiated from the rest by its larger size, radial elongation, more prominent nucleus. आउ सबु सेल भितर ता ना archisporial काई दियाला. Archisporial means spore arc माने पूर्व structure. So that's why archisporial. Larger size, radial elongation and more prominent. सबु बेले मु माहेश्वरी बहिरु पढिछि जोटा होछि मास्टर बुक से बहिरु एनी माने हायर सेकेंडरी बहि देखंतु लेखा आइदिबो archisporial cell is differentiated from the rest by its larger size, radial elongation, more prominent nucleus. More prominent nucleus. So microsporogenesis have to start hela तारे तीनटा स्ट्रक्चर को मन रखिया पड़ियो आपण मानको endothecium, tapetum and microspore mother cell. Microspore mother cell undergoes reduction division to form the microspore tetrad. Microspore tetrad. Megasporogenesis is the megaspore केमती formation होची and microspore tetrad मु कहिछि जो माने बॉटनी पीजी थिबे आपण मानको भीतर जो माने थिबे माने देखते माइक्रोस्पोर टेट्राड 5 रकम अरेंजमेंट अछि. टिपिकल होची टेट्राहेड्रल तापर होची लिनियर लाइन ने थिबो चारटा जाक स्पोर लाइन ने रहइबो चारटा जाक स्पोर लाइन ने रहइबो लिनियर टी सब टी भଳି आइथिबो एमटी आइग्री टी भଳି आइथिबो इटी दीटा सेल थिबो आइटी दीटा रहला एंड टी शेप्ड inverted T shaped एटा inverted T shaped हला सीधा रहइबो ऊपरटा चौड़ा आइदिबो आइसोबायलैटरल एमते सब 4-5 रकम अछि 4-5 रकम अछि. कंपाउंड पोलन ग्रेन्स आर नोन एज कंपाउंड पोलन ग्रेन को कोन कहंती कंपाउंड पोलन ग्रेन्स आर नोन एज पॉलिनिया जोटरा वाल नाही सपोजिंग आदरा वाल नाही से चारटा को न्यूक्लियस एकाठी अछंदी. कंपाउंड पोलन ग्रेन्स आर नोन एज द पॉलिनिया and pollinia are seen in case of
को केस रे टिपिकल केस होची कालोट्रोपिस अरख गछ रे होची कंपाउंड पोलन ग्रेन्स सो एटा टिके मन रखिए बही रे नाही बट as teachers one has to remember this thing what are compound pollen grains entrance से पिलांगर पढ़े compound pollen grains what is known as the compound pollen grains so ये होची माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस सेमती मेगास्पोर रो सेल जो सेल इनिशिएट होची से सेल को कहंती आर्किस्पोरियल सेल सेम थिंग आर्किस्पोरियल सेल किंतु यार दी रकम रो अछि तार डेवलपमेंट डिफरेंट ओटा कहंती ये बहिर नै क्रासिन यूसेलेट टेन्यून यूसेलेट पेरिफेरल पोर्शन ले टेनिन यूसेलेट क्रासिन भीतर को जदि आर्किस्पोरियल रहला ता कहंती क्रासिन यूसेलेट एमदी दीटा टाइप रो थाए क्रासिन यूसेलेट टाइप ऑफ आर्किस्पोरियल सेल टेनिन यूसेलेट टाइप जो भी मेगास्पोरोजेनेसिस स्टार्ट हुए मेगास्पोरोजेनेसिस स्टार्ट हो जो भी मेगास्पोरोजेनेसिस जो स्टार्ट होई सेटा होची ए तारे एते डेवलपमेंट पिला को कहबा दरकार नै हायर स्टेज रे से माने जानिबे ताकू कोंदे आर्किस्पोरियल सेल मेगास्पोरोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन so how megaspore is being formed so that is the description the type of the archisporial cell pratham division hobo periclinal division hobo outer wall layer formation hobo inner ta divides redivides ette tar division nai khali कहयो पुडे पिला को divides redivides on the megaspore tetrad and megaspore tetrad ette रकम arrangement nai linear tetrad megaspore formation होय linear tetrad आ भितरु ए तीनटा भितरु ए चारटा भितरु गोटाए तीनटा डिसऑर्गेनाइज कर जाए तीनटा डिसऑर्गेनाइज कर दिबो गोटिए मात्र रहिबो दैट इज द फंक्शनल मेगास्पोर एम्ब्रियो सा केमिति होय एटा न्यूसेलस भितर होची ओव्यूल भितर न्यूसेलस अछि न्यूसेलस भितर मेन बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज द न्यूसेलस मु कहि तारे न्यूसेलस भितर होई सब डेवलपमेंट सेठी क्रासिन न्यूसेलेट टेनिन न्यूसेलेट जो दी टाइप रो अछि जो एम्ब्रियोसाइक डेवलपमेंट सेम दिया हुए आ तादर लोअर मोस्ट फंक्शनल लोअर मोस्ट रहिला लोअर मोस्ट होची दैट इज द फंक्शनिंग न्यूक्लियस काईगी ना मेगास्पोर रे सीड फ्रूट डेवलपमेंट होची तेणु सब जाक फंक्शनल नताय गोटाय थाय दैट इज द अडैप्टेशन केमती हिची कोन हिची एवडा हमर परव्यू रे डिस्कशन नाही किंतु गोटे मेनली किंतु अछि मोनोस्पोरिक बाइस्पोरिक टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसाक 16 टाइप रो अछि माहेश्वरी बहिर अछि 16 टाइप रो एम्ब्रियोसाक डेवलपमेंट मोनोस्पोरिक दी रकम रो बाइस्पोरिक दी रकम रो टेट्रास्पोरिक 4 गला आ 10 रकम होउची 12 रकम होउची टेट्रास्पोरिक 12 टा टाइप रो कोन फ्रूटिलेरिया टाइप ड्रूसा टाइप आडोक्सा टाइप केते टाइप अछि तेणु ये मात्र मोनोस्पोरिक दी रकम माने माहेश्वरी बहिर अछि किंतु आमे तो पिला को एते कथा कहबानी एटा होचे मोनोस्पोरिक गोटिए मात्र फंक्शन करियो मेगास्पोर भितरु गोटिए फंक्शन करियो मेगास्पोर मींस दैट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन मेगास्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन फर्स्ट सेल एंड दैट न्यूक्लियस आर खाली न्यूक्लियस डिवाइड करियो न्यूक्लियस डिवाइड्स टू दीटा न्यूक्लियस डिवाइड करिवो आ जे न्यूक्लियस डिवीजन परे ता मझरे वैक्यूल डेवलप होबो वैक्यूल डेवलप हेले गोटे एपोल को चल दिबो आ गोटे एपोल को चली आसबो केमिति एम्ब्रियोसिया कहू जे हमें कहू से दैट इज मेगास्पोरांजियम एम्ब्रियोसिया की द मेगास्पोरांजियम सो ये दुईटा पोल को पळेले सेल माने न्यूक्लियर डिवीजन होबो सेल प्लेट फॉर्मेशन होबो तापर ये एकरु ये पुनी आउट डिवाइड करिवो दुई हेला ये आउ तो डिवाइड करो ओनली 2 टाइम्स डिवाइड करले चारटा हे गला चारटा रो आरो गोटी लगा चले सो सेंटर को तेणु से 2009 तो पोलर न्यूक्लियस और सेंट्रल सेल केतर को ना था डेफिनेट न्यूक्लियस और केतर को ना कोन जोटार फ्यूजन प्रोडक्ट इज नोन एज द जो एंडोस्पर्म फ्यूजन प्रोडक्ट इज नोन एज द प्राइमरी एंडोस्पर्म सो ये एमदी तापर ये तीनटा माइक्रोपाइलर तीनटा हबो कोन ना एक apparatus हबो
कैलादर तीनटा रोबो एंटीपोडाल्स हो आ मझे रहबो सेंट्रल सेल एमती आबो तेणु एटा होची मेगास्पोर फॉर्मेशन रे typical embryo sac question होची typical embryo sac in angiosperm are 8 nucleate and 8 celled 7 celled 6 celled 4 cell structure कितना सेल लला आठटा न्यूक्लियस कितना सेल 7 cell. 7 cell structure so 8 nucleate and 7 cell structure which are the flowers to show ओ ये सरी गला ये रू आ विशेष ये बहिरे विशेष किसी लेखा नहीं ये आमो ये बहिरे अछि काउंसिल बहिरे अछि किंतु ये एनसीईआरटी बहिरे नहीं एते कथा ये टिपिकल एम्ब्रियो sac is 8 nucleate and 7 cell structure which are the flowers to show typical autogamy pollination asla what a part asla pollination what is the meaning of pollination means transference of pollen grains ये दीटा वर्ड निश्चित लिखिया पड़ियो from the anther of a flower to the stigma of the same flower or a different flower of the same species no that is the meaning of pollination na definition hoji seya pollination is the process of transference of pollen grains from the anther of a flower to the stigma of the same flower or different flower whatever it may be that but it is a transference of pollen grains so which pollination there are pollination basis रे pollination दी रकम आगो कहउतले आगो गरे ये बहिर उठी जाईची ये रे 9th 10th बहिर अभी आउ नाही होची pollination होची तीन टाइप रो एबे आउ कहउनाते आम बेले हमें पढुतलु pollination हो दी टाइप रो ओटा होची सेल pollination आ गोटे होची क्रॉस pollination एबे सेल क्रॉस उठी गलानी सेल्फ क्रॉस pollination उठी गलानी एबे होची pollination होची तीन टाइप रो गोटे होची ऑटोगामी आ गोटे होची Genogamy. एक्टोनोगामी थर्ड टा होची झेनोगामी तीनटा टाइप रो pollination होची ओटा होची ऑटोगामी is the transference of pollen grains from the anther of the flower to the stigma of the same flower ला ऑटोगामी आमे जाको सेल pollination को क्रॉस जो गेटोनोगामी होची सेटा होची मोनोइशियस प्लांट रे मेनली मोनोइशियस प्लांट आपण जानते मोनोइशियस प्लांट दी रकम रो अछि मोनोइशियस डायोसिस जानछन तो कखारु गछ होची मोनोइशियस प्लांट जो फूल बिक्री होची those are all male flowers जो फूल बिक्री होची फूल बिक्री होची those are male flowers because from those flowers there are no carpel no ovary so there won't be any fruit development fruit habo nai tenu se those are male flower जो फूल रो बेसे तळे एमते गोटे सोलन पार्ट अछि ग्रीनिश सोलन पार्ट से होची फीमेल फ्लावर so same plant यदि same plant रे ब्रेक हो नहीं ब्रेक same plant रे if same plant at different portions different positions bear unisexual flower किछि flower male किछि flower female ताहले that is monoecious बुझी पाले कि monoecious means on the same plant male plant male flowers and female flowers are born on the same plant so flowers are unisexual monoecious flowers are unisexual but plants possess both male flowers and same plant से होची typical example होची कखारु कलरा
जर्नी ये सब हूँ टिपिकल मोनोइसियस प्लांट्स डायोसियस कोड़ा वो dioecious plants are strictly male plant or female plants are separate हाँ आउ गोटे मोनोइसियस प्लांट टिपिकल एग्जांपल मन रखु मका गछ कदली गछ बनाना दोज आर ऑल मोनोइसियस प्लांट्स मका गछर ऊपर जोड़ा थाए ऊपर पोर्शन मका तल पोर्शन मका फले सेटा होची फीमेल फ्लावर मका फळुची जो फ्लावर ऊपर पोर्शन को रहिला स्टेराइल पोर्शन दोज आर ऑल मेल पार्ट्स सेमती कदली रो जोटा भंडा पोर्शन सेटा दैट इज मेल फ्लावर आउ जोटार ना जोड़ा आगु को रहिला भंडा है जोटा बाहरी गला आउ जोटा डेवलप हो गला दोज आर ऑल फीमेल पार्ट फीमेल फ्लावर सो फीमेल फ्लावर से गुडा डेवलप करची मेल फ्लावर किछि होनी जे भंडा है से को जाउची सो ए होची टिपिकल मेल मोनोइसियस प्लांट डायोसियस होती टिपिकल एग्जांपल होची खजूरी खजूरी डेट पाम रे जो गोटे गोटे गछ अछि खाली फ्लावर हबो किछि फल हबो दोज आर टिपिकली the dioecious plants male plant and female plants are separate male and female plant alga alga रहउछथि those are all dioecious plants तो सादे ब्रेक फॉर केते 5 मिनट 5 minutes break then there are nearly 40 questions more 15 टा में डिस्कस करले और 50 40 टा अछि we'll discuss okay thank you
Start. Acha. Welcome back. Next question. Which are the flowers to show typical orthogamy? Which are the flowers which show typical orthogamy? Cleistogamous and Gaetonogamous, Cleistogamous and Chasmogamous, Cleistogamous and Genogamous, Chasmogamous and Genogamous. ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ କ୍ରସ୍ ପଲିନେସନ ଗେଟୋନୋଗାମି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଥାର୍ଡ ଟାଇପ ହଉଛି ଗେଟୋନୋଗାମି ହଉଛି monoecious plant ରେ ଗେଟୋନୋଗାମି occurs and genogamy ହଉଛି ଗୋଟେ foreign plant, same plant ନାହିଁ, different plant, maybe of same species or may sometimes also different species. Geno means foreign. So ଗୋଟେ foreign plant ଗୋଟେ unknown plant ସାଙ୍ଗରେ ହେଲେ सेम प्लांट नुहे ताको कहवा जेनोगामी वर्तमान आमे ए तीनटा टाइप रो पॉलिनेशन कुआ होची आउ सेल क्रॉस को उठी जाई छी आउ पढ़ा होनी आ क्लासिकल पढ़ा माने कुआ होतला सेल पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन आउ सेमिति नाही सर क्लिस्टोगेमस फ्लावर so which are the flowers to show typical orthogamy? Cleistogamous and Gaetonogamous. Gaetonogamous हेले हबनी orthogamy same flower हबनी. Cleistogamous flower. क्लिस्टोगेमस सर Second है जो Cleistogamous and Chasmogamous. Chasmogamous flowers never open. So Cleistogamous, Genogamous, Chasmogamous ये बही रे अच्छी आपनकर बही रे ये बही रे अच्छी Chasmogamy and Cleistogamy. Which is not the characteristic of Cleistogamous flower. Cleistogamous flower कोटा characteristic नुहे. Do not open at all. Anthers and stigma on separate flowers. Anthers and stigma in close contact. Born in same flower. Do not open at all. Anther and stigma are not. Anthers and stigma on separate. Anther and stigma indicate the characteristic of wind pollinated flowers. Wind pollination, anemophilous. Pollination mu कहली जो तीनिटा हुए ऑटो गेटेनो जेनोगामी same the केमिति pollination, what are the agents who carry out pollination? The चारोटी agent जरा जो biotic abiotic हमें एमती divide कर दे परिवा biotic होची insect की human being animals आउ abiotic होची wind and water. So wind and water पे जो flower जो pollen ने adaptation था है pollen की anthar adaptation सब था है indicate the characteristic of wind pollinated flowers. Large, colored, fragrant, have nectar. Small, colored, flowers with light pollen grains carried in water. Small flowers and light pollens and non-sticky pollen grains. Small flowers and light and non-sticky pollen grains produced in large numbers. Large colored nectary pollen grains, sticky. आवितरु कैरेक्टर होची तारा स्मॉल फ्लावर्स फूलो गुड़ा छोटो फूलो को भी कैरी करके नहीं जाई पारे इन विंड चली जाई पारे स्मॉल फ्लावर्स लाइट नॉन स्टिकी कोड अटकी जीवनी पवन उड़ी पळेबो नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर बहुत हबो बहुत संख्या रे हबो असंख्य हबो आ छोट फूलो को कैरी कर नहीं जाई पारे ये थिले पोलन ग्रेन होची लाइट एंड नॉन स्टिकी लागिवनी इंसेक्ट देरे लागिवनी कि को ऑब्जेक्ट रे लागिवनी अटकी जीवनी
and large number produce हुए. Which one of a flower provide nutrition to the insects in the process of pollination? कोटा nutrition provide करूची ये to insect अच्छी गोटे type रे insectivore entomophilous flowers, anemophilous, entomophilous, zoophilous, hydrophilous. So entomophilous flower रे insect को food जोगोची, nourishment भी जोगोची flower कोटा nectar, color, scent, size. Color, nectar, scent, size. Which one? Nectar. Which one of a, yes, nectar. Which one of a flower provide nutrition to the insect in the process of pollination? So nectar. Yella mane general pollination process. ताप गोटे पार्ट अच्छी दीटा नुआ कथा माने आमे जाको आगो पढौतलु कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन आजिकल ताको करचंदी टिके बेटर ये करी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस यदि खाली क्रॉस सेम जो सेल पॉलिनेशन ऑटोगामी कंटिन्यू करिवो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ताले कोन हबो तार हाइब्रिड विगर डेवलप करिवोनी with the changing circumstances environment the plant cannot adjust, it cannot produce better seeds, viable seeds. So there are a lot of handicaps jodi khali autogamy chalila generation after generation teno there are certain adaptations, special adaptations ame olden time re age padhautulu ताको contrivances केमिति contrive करूची for cross pollination. So to avoid self pollination, what are the contrivances of cross pollination? Like dicliny माने गोटे यूनिसेक्सुअलिटी ताको अदरवाइज कोइ परिया गोटे होजी मेल फ्लावर फीमेल जेमति गेटेनोगैमस गोटा जगह रे मेल फ्लावर होची आ गोटा जगह रे फीमेल फ्लावर होची डाइक्लिनी गोटे होची डाइकोगामी जो बाइसेक्सुअल फ्लावर स्टामेन आगो मैच्योर करथिवो प्रोटैंड्री आउ गाइनोसियम परे मैच्योर करथिवो किबा गाइनोसियम आगो मैच्योर करतो प्रोटोगाइनी स्टामेन परे मैच्योर करतो सो डिफरेंट टाइम रे मैच्योर करले पॉलिनेशन होबो ठीक टाइम रे पॉलिनेशन दरकार सो दीज आर ऑल हाइब्रिडिंग लाइक हर्कोगामी गोटा ये हबो माने गैमी मीन्स मैरिज तो माने फ्यूजन सो से फ्यूजन पई गोटा कोन बैरियर थिवो हर्कोगामी हेटेरोस्टाइली एमता सब चारि पांचटा कोन हमर सब आगे पढा होतला वर्तमान ताकू करछन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस चेडो माने ऑटोगामी जदी कंटिन्यू करिया ता कहबा इनब्रीडिंग डिवाइस इनब्रीडिंग पे भी एडाप्टेशन अछि प्लांट रे आउटब्रीडिंग पे भी एडाप्टेशन अछि सेमते आउटब्रीडिंग डिवाइसेस तादर भी क्वेश्चन आसी पारे which is not an example of outbreeding device कोटा भितरु outbreeding device नुहे pollen release and stigma receptivity not synchronized फुलटा हेतिबो bisexual but pollen release करिवो and stigma receptivity not synchronized stigma कयो मु रिसीव करिवेनी सेटा से स्टिकी नथिबो से एंटांगल करि पारु नथिबो जी एटा को पोलेन टाकू सो सेटा व्हिच इज सेटा गोटे आउटब्रीडिंग डिवाइस आंथर एंड स्टिग्मा प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन ओटा तळे अछि ओटा ऊपर रहउछि सपोजिंग आंथरटा रहला तळ लेवल ले स्टिग्माटा रहला ऊपर लेवल ले तेणु ए जाई परिबोनी सो दैट इज अनदर एडाप्टेशन आ भितर कोउटा नुहे मु भाबुछि प्रथम दिटा नुहे थर्डटा होछि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स reproductive organs mature simultaneously ताले एटा ही होची बोधे it is not an outbreeding device flowers are unisexual so third टा होची answer माने क्वेश्चन होची या which is not an example of outbreeding device आ भितर कोटा outbreeding device नुहे
pollen release and stigma receptivity. Pollen release होतो stigma receive करी पाइबार शक्ति रखिथिबो. Not synchronized. गोटे टाइम रे होउनी simultaneously ही पारुनी. Anther and stigma placed at different heights. Different height रे रहउची. Bisexual, full of bisexual. Reproductive organs mature गोटे टाइम रे mature करछथि. So it is not a outbreeding, it is a inbreeding device. Flowers are unisexual. Unisexual हेले तो गेटोनोगामी हबो. So 22. Gatonogamy occurs in कोउतरे gatonogamy होउची. चारटा एग्जांपल दिया होइची. For example, maize, oxalis, viola, camelina. ये सब यही बही रे अछि, बही रु मु देइची. तेनु maybe question may be coming. मु आपन कहिची जे gatonogamy को केस रे हुए monoecious plant रे हुए. Mainly monoecious plants or gatonogamy को केस dioecious हेइतिबो ए bisexual हेइतिबो किंतु गोटे टाइम रे मैच्योर कर नथिबो. कोन कोन जो आउटब्रीडिंग डिवाइस जति दिबो ताले से आगोटा को जीवो. किंतु से आमे स्ट्रिक्टली कहि परे गेटोनोगामी occurs in monoecious केस. कखारु जो कोन जर्नी कलरा ये सब क्यूकरबिटासी फैमिली all through different गोटा होची मेल फ्लावर गोटा होची फीमेल फ्लावर. So gatonogamy occurs in maize, oxalis, viola, camelina. ये तीनटा एक camelina viola ये होची तीनटा एक होची bisexual flowers. Maize होची unisexual flower. Maize केस रे होची flowers are unisexual. So gatonogamy occurs in maize. मु कहितली maize रो ऊपर होची male flower तळ होची. When in a bisexual flower, pollen mature fast, ovary matures later. It is called protogyny, protandry, unisexuality, heteromorphism. Protandry. Protandry B, protandry right. When in a bisexual flower, that is an outbreeding device. When in a bisexual flower, pollen matures fast, ovary matures later. It is called not protogyny. Jodi gynoecium mature fast korto protogyny. Proto means fast. Protandry, unisexuality. Flowers may be bisexual लिखा है जी bisexual flower. Question होची heteromorphism. Morphism में दीटा फॉर्म रना होती heteromorph नो तेनु ए जो आंसर होची protandry. 24. Which one does divide to form male gametes in angiosperm? कोटा divide कले male gamete होची. Tube cell, stalk cell, generative cell, vegetative cell. Generative cell. Generative cell, right. Generative cell. कारण जेतले pollen tube टा formulate carries the generative nucleus. से nucleus चली गला से last divide करियो to form two male gametes. Tube cell तो tube करियो. Which one of embryo sac does contain filiform apparatus? एटा बोलते जाइछि ना हो. Which one does of the embryo sac does contain filiform apparatus? Egg cell, antipodal cell, definite nucleus, synergids जाइछि. Which one cannot be included under pollen pistil interaction? कोटा का में कहबाने pollen pistil interaction. Which one cannot be included under pollen pistil interaction? Pollen recognition, pollen tube growth, pollen maturation, pollen initiation.
Pollen maturation. Pollen recognize करिवाटा होची pollen pistil interaction से Pollen recognize maturation. नकल receive कले grow करिवनी. So that is one pollen pistil interaction. Pollen pistil interaction न हेई पा हेले pollen tube grow करिवो. Pollen maturation न किछि इटी depend करूनी. ओजे pollen tube growth कला तापर pollen mature कला. Pollen maturation. Pollen mature करूची ये होची सेटा that is independent of pollen pistil interaction. The fourth point है pollen inhibit जैसे कर दला. Inhibit कर दला. It is clear case of pollen pistil interaction. Clear case recognition होची clear case. Pollen tube growth होची clear case of pollen pistil interaction. जदि interaction नहब grow केमती करिवो. ताको penetrate करिवो. से ताको फंपाटा नहीं. Cell को penetrate करिवो. So there is some interest. There should be compatibility. Compatibility ना थिले हपनी. So that is these three are clear case. Pollen maturation. Pollen तार mature करूची. That may be pre-pollination stage रे mature करी परे. पढ़ी साला परे mature करो जेड़ा pollen ना निजस्व कर्तव्य. निजस्व कार्य. It is not dependent on the two pollen pistil. The process of removal of anthers from the flower bud before anther dehisces in order to initiate hybridization is called genogamy order assuye. The process of removal of anthers. Anther को यदि remove करिवा. कोई काम करी मेंडल. Emasculation. Biology हमें पढ़ू. हमें biological science पढ़ते मेंडल जो. Emasculation. आगे कौन कहूँ? ये जो हमें ताकू बजे पी प्लांट रे मेंडल करथिले एक्सपेरिमेंट पढ़ाई थिवे सर अछि तो सेकंड ईयर अछि सर पढ़ाई थिवे पी प्लांट रे एक्सपेरिमेंट करिसंती पी प्लांट इट इज ए वर्साटाइल प्लांट मु पी प्लांट को कहबी इट इज ए वर्साटाइल प्लांट एवं आउ जने आसी बसी गला अच्छा it is a versatile plant. It is a bisexual ये 9+1 stamen गोटे होची कार्पेल 9+1 stamen गोटे होची कार्पेल हमें चाहिले stamen की रिमूव कर दे बारे इजीली ताको कौन थी जो ये डायडल्फस कंडीशन ये 9 यूनाइटेड 1 फ्री जो stamen not a united thai gote free easily remove kari paribo. So the process of removal of anthers from flower bud before anther dehisces in order to initiate hybridization is called emasculation, pollination, geitonogamy, tagging. Emasculation से जानी नतले मेंडल 1856 रे 1856 रे मेंडल एतरे एक्सपेरिमेंट करथले से होचंदी बायोलॉजिकल साइंस के किए हेल्प करिछि आमे आज बायोलॉजी पढुचे मु सबले कहे दुईटा तीनटा लोकम जगु आमे बायोलॉजी आज एई वर्तमान कहूजे दिस इज द किरण मजुमदार सह कहिसंती ये लास्ट टू डिकेड जाईची ये डिकेड रो स्पेस रो जा सरी जाईची कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रे जाईची वर्तमान होजी बायोलॉजी रो डिकेड वर्तमान जहा काम होउची जते टीका काम होउची सब बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की मु कहबी दुईटा लोक जो गोटा 19th सेंचुरी जने 20th सेंचुरी गोटे लोक होउची 19th सेंचुरी जे होउची मेंडल किसी बायोलॉजी रे ताकर इंटरेस्ट नथला ताकर अंक रे भलो थला स्टैटिस्टिक्स से इमास्कुलेट करथले से चाहिले रिमूव कर दोतले सेल्फिंग एंड देखुते प्रथमटा होउची पेरेंटल जनरेशन एटा होउची क्रॉसिंग तापर F1 जेते होई जाउची सेल्फिंग करूचंदी सो क्रॉसिंग कला माने इमास्कुलेट करथले गोटा ये को रिमूव कर दोतले स्टामेन को रिमूव कर दोतले कंप्लीटली तेणु से सेतळे करथले 64 रे से कहले तेणु मेंडल आरंभ कले बायोलॉजी से 1665 की एंटन वन लियोनहाउ के रॉबर्ट कॉक किछि नहंती जने माइक्रोस्कोप बाहर कले जने बैक्टीरिया कहले माइक्रोस्कोप डेवलप कले से देखि पारले हमें छोटो जिंस को बड़ करी देखि पारलु
किंतु तापरे ए मेंडल जो रीडिस्कवर 19th सेंचुरी माने बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी 1901 ने रीडिस्कवर हला आपण मान कहि परिबे बायोलॉजी रे सबुठु बड़ काम क्रोमोसोम स्ट्रक्चर 1953 1864 66 1953 यही दीटा होची लैंडमार्क होची दीटा सेंचुरी वर्तमान आमे यही स्टेज को बायोलॉजी आसी ये जो डिकेड कहउछन कमिंग डिकेड्स आर डिकेड्स ऑफ बायोलॉजी रो डिकेड समस्त बायोलॉजी पढिबे बायोलॉजी सबु पाठरे नोबेल प्राइज पाउछन फिजिक्स रे काम करूछन बायोलॉजी रे सो ए सेंचुरी होची सेमतिका तेणु सेही दी जण लोक तांकरी जोगु से जो तीन जण जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बाहर कले क्रोमोसोम स्ट्रक्चर आउ जो ये मेंडलिज्म यही दीटा होची लैंडमार्क होची दीटा सेंचुरी वर्तमान ये तो सेंचुरी चली देखा जो फ्यूचर कहबो मे बी कोविड में भी ये लैंडमार्क इन ट्रिपल फ्यूजन जानी स्ट्रक्चर मु एम्ब्रियो सैक रे करथली स्ट्रक्चर इन ट्रिपल फ्यूजन तादरे डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन होची मेल गैमेट फ्यूजेस विथ मेल गैमेट का सहित फ्यूज करूची सिनर्जिड्स पोलर न्यूक्लियस सेंट्रल हां पोलर सेंट्रल न्यूक्लियस सेल एंटीपोडल्स एक सेल मु जो चॉइस देउची ता भीतर कहबे सिनर्जिड्स सेंट्रल सेल एंटीपोडल सेंट्रल सेल ताले सार मैडम माने बढ़िया जानछथि तेणु पिला बढ़िया करिवे व्हिच प्रोसेस डज रिजल्ट इन जाइगोट को प्रोसेस रु जाइगोट होउची को प्रोसेस रु ए सिंगामी बी ट्रिपल फ्यूजन सी पोलन रिजेक्शन सिंगेमी डी सिंगेमी yes which one is a triploid structure egg cell embryo प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल मु जानबर मु जो चॉइस दोउची ता भीतर कोंतो तापर आपण माने पचारियो मु कहबी which one is a triploid structure egg cell embryo zygote primary endosperm nucleus Primary endosperm nucleus. which is a unrelated pair कोटा unrelated pair syngamy zygote zygote embryo primary endosperm nucleus endosperm primary endosperm nucleus zygote प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस zygote. लास्ट ऑप्शन सर लास्ट primary endosperm nucleus zygote because primary endosperm nucleus is triploid that is diploid that is a triple fusion product this is a syngamy product double fertilization product yes sir. which one is an example of free nuclear endosperm which one is an example of coconut water coconut kernel coconut water resinous grain bean seeds coconut bean water seeds. coconut water one of the following has no persistent seed coat आ भितर कार persistent seed coat नहीं rice wheat maize castor maize नहीं rice wheat maize गोटे टाइप रो castor is different which is a correct sequence megaspore mother cell megaspore embryo sac
egg cell. Mark करते megaspore mother cell, megaspore, embryo sac, egg cell, embryo sac, megaspore, megaspore mother cell, megaspore, egg cell. Sir, first our embryo sac, then megaspore mother cell, then megaspore, then egg cell. Yes, first hauji megaspore mother cell. Megaspore mother cell undergoes reduction division, forms four megaspore in linear tetrad. From a megaspore develops an embryo sac, and inside the embryo sac there is one egg cell. So taku emtia pila mu debe order pila emtia question takara ieri poduchi. Which is unrelated pair? Koda unrelated pair? Stamen pollens. Stamen pollens. मुझे choice दो ता भीतर कौन? Stamen pollens. Carpel ovule. Embryo sac egg cell. Pollen grain megasporangium. Pollen grain megasporangium. Pollen grain megasporangium. Next, which is unrelated pair? Calyx tepals, corolla petals, androecium testamens, gynoecium carpels. Calyx sepal. Sorry. Tepal कौन? Outre sir. हमें कागु tepal. हमें कागु tepal करेगा. हमें कागु tepal करेगा. Sorry sir. हमें tepal कागु कोईबा. Tepal. Sir, where sepals and petals are not clearly identified. Yes. When petals and sepals and petals are not differentiated, we call it perianth. Perianth. Individual members of perianth are called as the tepals. Tepal. Individual units. जेतेबेले सेपाल और पेटल को डिफरेंशिएट करि न हबो हमें तो कहबा पेरियांथ पेरियांथ रो इंडिविजुअल यूनिट्स जेंति करोला रो इंडिविजुअल यूनिट्स आर नोन एज द पेटल्स कॉलिक्स रो इंडिविजुअल यूनिट्स आर कॉल्ड एज द सेपल्स सेंति पेरियांथ रो इंडिविजुअल यूनिट्स आर कॉल्ड एज द टेपल्स Tepal. यस तेनो एटा कैलिक्स रो नुहे एटा होची पेरियांथ रो तेनो दैट इज योर आंसर इज करेक्ट. Which is the correct sequence in the formation of free nuclear endosperm? Free nuclear endosperm. Primary endosperm nucleus, vacuolation, free nuclear division, cell organization. Cell organization, primary endosperm nucleus, vacuolation, free nuclear division. प्रथमटा होची मु भाबुची बोले प्राइमरी एंडोस्पर्म nucleus. ना प्रथमटा नुहे द्वितीयटा नुहे प्राय तापर वैक्यूलेशन और फ्री एंडोस्पर्म आगर न्यूक्लियर डिवीजन हबो. सेल ऑर्गेनाइजेशन सेकंडटा होची सेल ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस वैक्यूलेशन फ्री न्यूक्लियर नुहे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. हां थर्डटा ये सुनंतु थर्डटा को मुझे देखो सीधा बोले ठीक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन vacuolation cell organization तापर centripetal wall formation हबो नुहे की जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म रे जो कोकोनट रे हमें कहते कोकोनट वाटर इज Free endosperm nucleus. पार्ट तार जोटा कर्नेलटा कोन Cellular endosperm. that is endosperm किंतु कोन आइची Cell wall formation आइची. मु जाको सुनंदु प्रथम हला प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस तार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हला इनिशियल स्टेज थिला खाली पानी थिला ता भितरे पानी थिला तापरे हला वैक्यूलेशन हला जो तापरे सेल प्लेट फॉर्मेशन हला सेंट्रीपेटल पेरिफेर रु टुवर्ड द सेंटर सेल प्लेट फॉर्मेशन हला आ पूरा प्लेट फॉर्मेशन हैनी जदी बहुत दिन हम नोडिया को रखि देबा ताले से जो नोडिया आइ जो दैट इज फ्री पूरा कंप्लीटली सेलुलर हे जीवो से कंप्लीट हे न थाई बोली हमें त पॉइड को जेतले सरी गला पानी कमी कमी का आसीबो ताले सेल प्लेट फॉर्मेशन कंप्लीट हे जीवो. सो वैक्यूलेशन पर सेल प्लेट फॉर्मेशन थर्ड टाउ जी करेक्ट ऑर्डर. एम्ब्रियो सैक डेवलप्स फ्रॉम कोड एम्ब्रियो सैक डेवलप करे ओव्यूल जाइगोट प्राइमरी एंडोस्पर्म ओवरी. Embryo develops from embryo.
Embryo develops from ovule, zygote, primary endosperm, ovary. Zygote. Yes, zygote. Zygote, when zygote becomes cellular, आमे ताको प्रो एम्ब्रियो एम्ब्रियो तादरो तापरे जावो सीड हबो जावो एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड आ कोन अछि एपिकोटाइल हाइपोकोटाइल कोटिलेडन्स प्लीम्यूल Yes. embryo consists of embryonal axis and epicotyl, Yes. hypocotyl, cotyledons, plumule. Embryonal axis. Cotyledons. Dita part अछि गोटे embryo Cotyledons. dita part embryonal axis and cotyledons. Embryonal axis dita cotyledon name जातिबो embryonal axis जति एमति हला axis मु करि पने चित्र एमति दीटा cotyledons हो embryonal axis गोटे जते गजा होउसी embryonal axis and two cotyledons. Plumule can be called. Plumule को हमें कौन कोई परिवा? What is plumule? Shoot apex. Shoot apex. Plumule is Shoot apex. yes. Stem when a primary stem develop plumule. Plumule is stem tip. A plumule can be called as root tip, stem tip, radicle, cotyledons, stem tip. Stem tip. Stem tip. A plumule and radicle. Jitara gote germination hoउची दीटा part develop होती. Plumule and radicle root system. What is present in the cotyledon of grass family? Cotyledon of grass family. What is present? Scutellum. Muझे ये boy रे अच्छी. मुझे boy रू देखी. Embryonal axis. Hypocotyl. Epicotyl. Scutellum, epicotyl, hypocotyl. Yes. That is scutellum. Scutellum. Coleorhiza is the covering of radicle and root cap, shoot apex and leaf primordia, radicle and root hairs, radicle and shoot apex. Coleorhiza is the covering of. Boyre say ये boyre अच्छी जा मु तार दो दीची radicle and root cap. Yes. Radicle and root cap. Coleorhiza तार opposite है ला coleoptile. Coleoptile is the covering of radicle. Shoot apex and leaf primordia. Leaf primordia. Shoot primordia, no leaf primordia. Shoot apex. Leaf primordia. Your nodes. Fertilized ovule is very simple question. Fertilized ovule is fruit, endosperm, embryo, seed. Embryo. Fertilized Seed, ovule seed, seed. Seed. Fertilized ovule is fruit, endosperm, embryo, seed. ମୁଁ ଯାହା ପଚାରେ this is a simple question, please answer it. Fertilized के ठीक कोई ना fertilized ovule is fruit, endosperm, embryo, seed. Fruit, sir. Fertilized ovule seed है sir. Seed कौन भटो? Fertilized ovule is seed. Fertilized ovary is Oh, fruit. fertilized ovule is seed. मन रखो तो fertilized boy रे fertilized ovule is seed. कौन गीत का आचरण है? ये कौन है ला? Sir के boss रे अछंती? Fertilized ovary is Fruit sir. Fruit, sir. Ovary. Fruit sir. fertilized ovary is fruit.
Which pair is incorrect? Which pair is incorrect? Non-albuminous seeds, no endosperm. Albuminous seeds, endospermous. Non-albuminous seeds, endospermous. Persistent nucellus, perisperm. को पेयर ता ठीक नुआ नॉन एटा नेगेटिव क्वेश्चन नॉन albuminous seeds no endosperm albuminous seeds endospermous non albuminous seeds endospermous persistent nucellus perisperm non albuminous seed endospermous जोटा আছে সেটা yes non albuminous seeds endospermous non albuminous means no endosperm endosperm जार नथा है ये non albuminous albuminous seeds means endospermous persistent nucellus जार था है से इधर fruit रे था रहिबो ता कोन दे perisperm which pair is unrelated P non albuminous maize albuminous castor albuminous groundnut albuminous groundnut non albuminous groundnut albuminous টা yes 47 which one has non albuminous seeds barley wheat beans rice beans what are the requirements for a seed to germinate it is germination fundamental question air water and temperature air water and temperature more सेमते तो देइनी मो moisture oxygen temperature देइची moisture and oxygen देइची moisture and temperature देइची moisture water and light देइची moisture water and light moisture मो water को नहीं moisture oxygen light moisture oxygen मो आउ air देली oxygen और light boy रे सेमते आची moisture oxygen and light sir moisture oxygen and temperature moisture oxygen light matured ovary say question achi it matured ovary is a fruit true fruits develop from thalamus integuments nucellus ovary which is jodi integument re ovary nahi integument re develop kala eta true fruit hei pariboni jodi integument re ovary achi ovule achi ovary nahi which is not a correct statement about seeds which is not a correct statement about seeds have better adaptive strategies for dispersal to new habitats have sufficient food reserves for young seedlings produce no new genetic combination which may lead to variation provides nourishment till photosynthesis starts in a new plant which is not a third pit produce no new genetic combination which may lead to variation eta yes sir not for us third term podchu produce no new genetic combination which may lead to variation eta ठीक sir प्रथम डायला have better adaptive strategies for dispersal to new habitat को पळै जो चली जो adaptive strategy अछि तार fruit रे थाए seed रे थाए have sufficient food reserve food reserve रहउची केतबे food टा को हमें रखी पारुची बहुत समय आ गोटे होची provides nourishment till photosynthesis starts in a new plant so एगुडा होची adaptation last time हुए seeds formed without fertilization is called seeds formed sir again प्रार्थना करते fruit form वाले प्रार्थना करती हो
seed form. Sir, apomixis. Yes, sir. Apomixis. So choice दिया है parthenocarpy, apomixis, syngamy, triple fusion. Allah, which is not apomictic process. कोटा apomixis process नु है. Seeds formed by sexual reproduction. Egg diploid, but no sexual reproduction. Egg diploid, egg diploid na haploid. एक का haploid cell. Yes, I तो समझ लगला. एक सारा haploid. Nucellular tissue produce embryo, no sexual reproduction. Nucellular tissue haploid na diploid. Diploid. Nucellular tissue sir Yes, diploid. Time कहीं लगला. भावे वो लगला. Embryo sac थोड़ा वो समझते हो जैसे diploid. Embryo sac रा cell उड़ा खाली central cell नु है. आउ सब cell उड़ा diploid. Haploid. सबू cell. Synergids, egg cell, antipodals. आउ ये दीटा polar nuclei fuse हो गए central cell हो गए. That is binucleate. By दीटा nucleus रहती. Fuse हो ना आती. So it is a हमें कहवे गोटे type रो और ये होची mixture complex structure. किंतु एटा binucleate condition. It completely diploid no binucleate condition. तेणु सेटा को हमें दौनु ये होची seeds which is not apomictic process found from sexual reproduction. Sexual reproduction है सेटा first have sexual reproduction. Reproduction है हमें की mixes कहवा. आपको कुछ आपको apomixis ताको कौन कहवा? Amphimixis. Sexual reproduction है amphimixis. Yes, amphimixis. Apomixis without fertilization mixing होनी mixing है लेता कहवा amphimixis. So seeds formed by sexual reproduction है amphimixis. Egg diploid. Haploid नो है माने reduction division है नहीं. माने कोई cell से fuse कर जाती. Egg diploid but no sexual reproduction. Diploid होती sexual reproduction नहीं. Nucellular tissue produce embryo, no sexual reproduction. Seeds develop but no sexual reproduction. Seed होती किंतु sexual reproduction नहीं. Anemophilous flowers are pollinated by weed, water, animals, man. Anemophilous flowers. Anemophilous wind sir, wind. Wind sir. Male gametes are formed from tube cell, generative cell, stalk cell, primordial pody. Which gamete sir? Tube cell, generative cell. Generative cell. 55. Which cell undergoes? Which cell of embryo sac does form zygote? Synergid, antipodals, central cell, egg cell. Egg cell. Egg cell. So एमती 55 टा क्वेश्चन अछि गोटा हे गला गोटा अछि कोन डिस्कशन आ कोन if you have anything to ask me. Sir, adventative embryo ने ଟିକେ describe कर दियंतु. गोटा Adventative embryo ने. Adventative embryo ने सर ଟିକେ. गोटा लिखि दो बुझे गोटा मते के सुबुने टिके ठीक से कोन हां चार्ट रे लिखि जंदी अच्छा लिखि जंदी कोडी मैं कोन लिखिबा चार्ट रे लिखि दियो तो कोन कोटा को लिखि दियो सेटा हाँ कौन हो रखी है यस adventative embryo polyembryo नो adventative embryo ये तो ये वही नहीं होते एड़ा काउंसिल वही रहे अच्छी सर polyembryo ने अच्छी है तेरे अच्छी सर सर आओ एपोस्पोरी आउट के डिस्क्राइब कर देबे एपोस्पोरी लेके polyembryo नहीं अच्छी embryo seed reporter
ଆପୋସ୍ପୋରି से वर्ड रु आपण माने तार मीनिंग बुझी जिवे एडवेंटिटिव एम्ब्रियो नि एम्ब्रियो फॉर्मेशन हबो फॉर एडवेंट माने तार ये हबो एडवांटेज रे एम्ब्रियो फॉर्मेशन हबो एडवेंटिटिव एम्ब्रियो नि पॉली एम्ब्रियो नि एटा होची एटा पॉली एम्ब्रियो नि मींस कोन आमे कहूचे गोटे एग सेल रु गोटे एम्ब्रियो होची जाइगोट होची जाइगोट रु एम्ब्रियो होची जदि एक सेल रुला सिनर्जी रु गोटे डेवलप करि गला गोटे न्यूसेलर जे रुला किबा एक सेल डिवाइड कला एक सेल फर्टिलाइजेशन पर डिवाइड कला हमें जदि कहू ट्विन होचंदी सेमदी जदि बेसी एम्ब्रियो डेवलप कला एटा पॉली एम्ब्रियो नि से मेनली ए सब केस हुए बेसी जिम्नोस्पर्म केस रे एंजियोस्पर्म रे कम हुए सो से जो एडवांटेजेस जोटा एडवांटेज रे तार हला सुविधा पाई एटा हला एडवेंटिटिव एम्ब्रियो नि सेमदे apospori apogamy development of gametophyte without formation of spores आमे कहूचे सबरो दीटा जनरेशन अछि गोटा होची स्पोरोफाइटिक जनरेशन गोटा होची गैमेटोफाइटिक जनरेशन गैमेट फॉर्मेशन विदाउट स्पोर फॉर्मेशन इज नोन एज द apospori स्पोर फॉर्मेशन है ना आपो जेंते अपोमिक्सिस माने अपोमिक्सिस माने कोन आम्फीमिक्सिस माने दीटा को मिसिबे आम्फी हबो किंतु अपोमिक्सिस जले गोटा माने एब्सेंट रहइबो ये मेल फीमेल फ्यूजन हबोनी सो दैट इज आम्फीमिक्सिस अपोमिक्सिस सेंदे अपोस्पोरी गैमेट फॉर्मेशन विदाउट स्पोरोफाइटिक स्टेज स्पोर स्टेज सो दैट इज अपोस्पोरी एडा सब लोअर प्लांट रे ये रे लेखा होची बट ये बोय रे सब कथा नाही अने मु भाबुची आंको पे नाही कोडी मु देखुनी ए बयटा मु तो पढीची ए बोय रे नाही अपोस्पोरी अपोगामी एडा सब नाही एडा विविडली डिस्क्राइब होईची सीएचएससी बोय रे जोटा ये बोय किंतु ए बोय रे सब नाही ए बोय रे हार्डली केते पृष्ठ अछि आरंभ होला 19 रु सरीला 39 रे 20 पेजेस 20 पृष्ठ अछि आउ कोन कहबो हु कैन सी पेरिस्पर्म और पेरिकार्प difference कौन So perisperm is the nucellus which is present after the fertilization inside the seed, and pericarp is the outermost covering of the fruit. पेरिकार्प जो तीनटा लेयर थे तो कौन कौन Epicarp, mesocarp and endocarp. आए तो सब जानि जंदे मु कोन कहियो you know everything No sir. true आमे true fruit और false fruit का कहियो So true fruit means which is developed from the ovary with fertilization, and false fruit means which is developed from the thalamus. ए तो सब जानि जंदे हां सो false fruit को आमे कोन कहियो ओटा false fruit रो एग्जांपल कहले Apple sir, apple, pineapple are the false fruits. मु जदी कहबी कस्टर्ड एप्पल ए जोटा होची कोन ताको ए कहूची काजू नट is also false fruit sir. ट्रू फ्रूट होची फॉल्स फ्रूट होची कोटा ट्रू फ्रूट कोटा फॉल्स फ्रूट So cashew nut is the false fruit. जोटा काजू ही बिक्री हो सेटा ट्रू फ्रूट ना फॉल्स फ्रूट काजू कहले मंजीटा कि सर मंजीटा हेले सर मंजी तो सीड प्रेजेंट अछि तो सीड प्रेजेंट थिले भी से थैलामस ता स्वेल कर जाउची सोलेन थैलामस एटा होची फॉल्स थैलामस ता सोलेन होची जोटा को जूसी पार्ट आमे खाउची जोटा होची के काजू प्लांट बेस रे जोटा अछि जोटा बिक्री होची सेटा ट्रू जोटा बिक्री होची काजू बिक्री होची दैट इज ट्रू सेटा ट्रू दैट इज ट्रू सर हां सेटा ट्रू आ जोटा जूसी रसाळ जोटा सेटा होची थैलामस सोलेन नै जाईची यस सर सेटा तार टिप रे रहउची यस सर सेटा फॉल्स होटी
अच्छा फ्रूट केते रकम रो अछि ए बही रे नाही हम बही रे बहुत अछि Sir, सीबीएसई रे fruit बहुत कम sir, according to true and false development of fertilization, that is two types. That is, one is false and one is true. And according to seed present, there are many multi-seeded fruit also, one-seeded fruit also. सिंपल फ्रूट होजन दुई रकम रो कोन Multi-seeded and one-seeded. ड्राई फ्रूट एंड Dry से fruit and ड्राई juicy केते fruits. रकम रो अछि जे जुइसे ये नाही ए सब पाठरे नाही एठी Dry fruit से and जो juicy कहले fruits. पार्थेनोकार्पी पार्थेनोजेनेसिस या भितर डिफरेंस Parthenoge- पड़े पार्थेनोकार्पी होचे फ्रूट फॉर्मेशन सबले मन Yes, रखो तो sir. पार्थेनोकार्पी इज फ्रूट फॉर्मेशन जेनेसिस इज द Oh, yeah. प्रोसेस the New formation living organism for us. हां Parthenogenesis occur inside पार्थेनोजेनेसिस the एंड animal. पार्थेनोकार्पी तेणु से टिके ये कले सेटा ठीक अछि जो सीडटा इमिडिएटली हमें शो करिबा हार्वेस्ट करिया केते सीड धान को नै से एकले गजा हो जाउची किंतु अच्छा होबनी काई होबनी ओडा धान को हमें हार्वेस्ट कले अमल करी जदी इमिडिएटली बुणीबा धान रु होबनी गछ हो गछ होबो किंतु फळ होबनी न होई पारे न होई भी पारे काई होबनी न होई भी पारे बेसी चांस काई आमे धान को सीधा रखू वर्षे रखू तापर जाई कि धान को पुणी नेक्स्ट सीजन रे बुणु पुणी से जो पीरियड टा Embryo कोन is not कोन जो properly पीरियड टा mature. धान को रखंती Dormancy period. Dormancy. यस दैट Seed dormancy. डॉर्मेंसी सबळे सीड रो गोटा डॉर्मेंसी दरकार गोटा सीड रो डॉर्मेंसी दरकार से डॉर्मेंसी के हमें ब्रेक कर देई परिबा केमती आर्टिफिशियल वी कैन ब्रेक इट धान रे कोन होची आमे जो धान को वर्षे रखुचे डॉर्मेंसी डॉर्मेंट करी रखुचे से समय Yes, हमें sir. कोन करचे धान रो एज बायोलॉजिस्ट मु तो कहबिने प्लांट साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट हमें कोन करचे ताको तो टाइटली ड्राई करी के रखु छै. व्हाट इज विविपारी Sir, विविपारी vivipary means which give birth to a baby. विविपारस प्लांट गोटा एग्जांपल कोटा No, sir. माने No जर्मिनेट idea. करी पड़िबो को केस रे No, sir. No idea. मैंग्रोव प्लांट रे केते जगह रे देखा जाय धान मंजी जदी झड़ी पड़ला कि धान मंजी रहिला तादरु भी गजा बाहर किंतु से विविपारस नदी हेउची बेसली होची मैंग्रोव प्लांट होची विविपारस आउ सब हेले आमे सब कोन विविपारस ना ओविपारस We are viviparous, sir. विविपारस सुअर हां ठीक अछि ओविपारस की बर्ड्स Viviparous are Birds birds, allow sir. viviparous. Birds, reptiles. किंतु मु मनुष्य को पार्शियली विविपारस काहे ना मनुष्य पूरा डेवलप होई बड़ आसुनी डेवलप होई कोन पूरा आसी आमे गोटा छुआटा गले गोटा गां दरकार गोटा छुआ को मनुष्य करे गले ए विलेज इज नीडेड टू मेक ए चाइल्ड टू ग्रो गोटा पिला को बढ़ेबा गले गोटा गां दरकार कोनती गोटा गां Yes, sir. दरकार हो ए माने भलो जानि चंती बट पिला माने केमिति मु जानिनी बट यू हैव टू वर्क हार्ड गोटा ए कांसेप्ट हो ये होची जे वर्तमान सिचुएशन होची वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन 2 वर्ष लागिलानी प्राय 2 वर्ष पाखापाखि हो तेणु यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड पिला नांती मु बहुत सार बहुत कथा शुणुची केते सार अछन कि जाई पिला घर को जाई पढौछंती घर को जाई क्वेश्चन देई आछंती ताकि उत्तर करी आनुछंती आउ पिला को सार अछंती कहउछंती गले से माने कहउछंती कोविड कैरियर आपण तां गारे गार्डियन माने कहउछंती वर्तमान जो सिस्टम हला पिला टीचर भितरे गुरुकुल रिलेशन एबे डेवलप करिया पड़िबो सो ये Yes, sir. ये एमिदिया पाठर कांसेप्ट होउची जो सार करूचंदी काम जे आपण मानको पूरा इन्वॉल्व होबा गुडियो पिला बिना परीक्षा दे पास करचंदी कोन भल लागुची हमहु भल लागुनी No, sir. परीक्षा दे पास हां
ଅଲିମ୍ପିକ ହେଲା ନା 20 ଅଲିମ୍ପିକ 21 ହେଲା ନା ଆଉ 20 ପରୀକ୍ଷା 21 ପରୀକ୍ଷା ହବନି ନଇ ପିଲା ପାସ୍ ତା ଦେହରେ ପିଲା ଆଜିଟେସନ नो ତେଣୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ୱାର୍କ ଭେରି ହାର୍ଡ କେମିତି କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଡେଭଲପ ବଟ୍ ମୋ ଆଇଡିଆ ହଉଛି ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ଆପଣ ମାନେ ଯିବେ ମତେ ଜଣେ ଟିଚର ପାଇଛନ୍ତି ମତେ କହିଲେ ମୁଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମତେ ସମାଜ ଦେଇଛି ତାକୁ ଡାକିକିରି ସମାଜ ଦେଲା ଆମେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ପଢଉଛୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସୋ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଟେକ୍ କି କେମିତି ଆପଣ ଇନୋଭେଟ କରିବାକୁ ପଡିବ କେମିତି କରିବାକୁ ପଡିବ ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲାଇଜ ସାର୍ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ये जो सिस्टम कर नुआ पैटर्न ने परीक्षा होची किसी क्वेश्चन हम कहलु वी गेव सर्टेन आइडिया केमिति मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पड़िबो खाली ओपन एंडेड के खाली क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन पड़िबोनी सेंटेंस कंप्लीशन पड़िबो अरेंज थिबो एई कि थिबो कोटा ठीक बाहर करिया पड़िबो सो केते रकम रो अछि यू हैव टू क्रिएट यू हैव टू हैव सर्टेन आइडिया माने हमें किसी मेसेज देलु यू हैव टू कैरी इट फॉरवर्ड आगु केमिति हबो सेटा आपण मानक काम ये हला मोर सरी गला पुणी आउ केबे ये हबो मोर आउ तीनटा अछि बट जो मेसेज आपण पाइले जति बेसी कहंतु जहा बहि रे अछि पिला को सेति कहंतु जति एंट्रेंस फेंट्रेंस बोली जे को अधिका कथा कहंतु एडवेंटिटिव हला पोस्पोरी हला पोगामी हला जा जा हला ताको कहबे किंतु अपोमिक्सिस एम्फिमिक्सिस कहंतु एमता किछि किछि आपण माने जानि चंदी कहंतु एंड केमिति पिला आपण भलो करिवे आपण जो स्टॉप पाई चंदी आपण रिजाइन कर देवा कथा न पिला भलो खराब पिला रो भलो हेबे बहुत खराब पिला मु देखि मो संगे पढुतले जे बहुत भलो होई चंदी सो यू आर द मेकर्स ऑफ देयर डेस्टिनी थैंक यू Thank you, sir. Dear colleagues, now we come to the end of this today's session, and after 7 or 8 days, we will be having again repeating botany part. So thank you very much for your patient participation from 9 a.m. till now. So good day. Yes, sir. Okay, thank you very much. Yes. Thank you, sir. ठीक है ठीक है ఇది మారుతుందండి న్యూస్ ఛానల్ हेलो महातो सार म्यूट कर दियंतु हे जो म्यूट अनम्यूट कर म्यूट करन म्यूट कर
अनुप्रभा मैम साउंड म्यूट कर दियंतु सुना होजी हाँ सर Dear PGTs, now we move to the second day's deliberation. And आपण माने जानती आज भी मैथमेटिक्स विषय रे पढ़ाबो एवं मो पाखे अछंती आजर रिसर्च पर्सन श्री नगेंद्र कुमार मिश्र. Sir is a versatile mathematician and very much connected with the different confidential activity matriculation board ro एवं से बहुत समय भी क्वेश्चन सेटर हिसाब रे भी जानती क्वेश्चन सेट करे पे एवं he was the retired headmaster of Perimon Academy Katak. So move आपण मानक भितरे वो सार को मध्यरे बार बार को चाहने वर्तमान मु सारों को रिक्वेस्ट करूची सार वर्तमान तांको क्लास आरंभ करो सर प्लीज हां ठीक है बसी कर देखी बसी के देखी बस ना बसंत जत दरकार पड़े छे नहीं इंट्रोडक्शन के वीडियो है इंट्रोडक्शन बसी के सेवा के जो रही होचे सेंचुरी क्लास हो तो से सावधान कर खरांगे अब कितने सारे में अब टिके पटो जन अपन गाड़ी की मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड
See to ଆସିବନି ଆଠି ଆସି बंधुगण आमे आज मैट्रिकुलेशन करिकुलम उपरे किछि कहिबी एवं आमे भारतर लोक भारतर स्पेशली ओडिशार लोक आमे केते दूर आगे थिले एबे हमर कोन अछि कोन नाही तो जीवी आज मु आपण मानक सहित डिस्कशन करिवि एवं आपण मानक पढ़ेबार किछि नाही यू आर वेल ट्रेन्ड वेल वर्स एवं आपण माने बहुत जानी चंती केबे पढ़ेबार दुसाहस करिवि नाही केवल आपण मानक सहित शेयर करिवि किछि जानिया पई एवं आपण माने मते जणैबे मु आपण मानक जणैबि खाली एति कहूची जे भारत रे जहा नाई भारते ताहा नाई मरते ता माने भारतर लोक माने जो प्राचीन भारत एति विस्तृत थिला ता विषय आमे टिके खाली आपण माने जानंतु एवं ओडिशा मध्ये ताठो सबुठो भलो थिला जम्बू द्वीप होची ओडिशा आपण एति जानंतु पुरातन भारत जेतबेले पुरातन भारत भितर कोन कोन आमे थिले एवं गणित को आमर दान कोन आपण माने जानि चंती गणित को दान होची आमर शून्य केवल शून्य रे आमे रही गले किंतु प्रकृति रे आपण माने जानंती त्रिकोणमितिर प्रयोग भारत रे प्रथम हेतिला आपण माने या विषय जानंतु एवं आमे ताकू धरिकिरी रखी पारले नाही केवल शून्य ताकू रखी पारले काहेकि ना शून्य बहुत कष्ट देइकिरी जो पोथीटी थिला से काबुल जाई पहुंच जाई थिला जा हो कोनोसी प्रकार ताकू धरिकिरी रखी पारले किंतु आउ को किछि रखी पारले नहीं केवल जो त्रिकोणमितिर प्रयोग से कथा नुहे आपण माने देखंतु कुष्ठ रोगर निराकरण शाम्बक बेले हेछि आपण आउ गोटे कथा देखंतु चिकित्सा आयुर्वेद चिकित्सा ताको मध्ये आम भारत रे एजा आरंभ हेछि एवं ता सहित चेस खेल पोशाकर बोताम जहाँ सेत आमे कौथरे करथिले सामुकार तैयारी करथिले एवं आपण माने जानिथिबे पृथ्वीर घूर्णन जोगु जो लक्ष्य करी जो गणना भास्कराचार्य प्रथमे करथिले भारत वर्ष रे किंतु आमे सब भूली जाइछु आउ केवल आमे काहे कि शून्यटा को रखी पारिछु आउ काहे कि अन्य गुडा को रखी पारने मु आपण माने गोटे कथा कहूची देखंतु बहुत आगरु 5000 वर्ष पूर्वरु आपण माने जानिथिबे जे 12टी राशि नवग्रह 27 नक्षत्र एवं सेतिके नुहे 27 नक्षत्र मध्य नुहे आमे मध्य गांधारींकर 100 पुत्र थिबा आमे जानिचु एवं श्रीकृष्ण तले जाइथिले आनी धृतराष्ट्र पाखकू जे 5 खंडी ग्राम मागिया पई आपण देखंतु केते 5 9 27 12 100 आमे सबु जाका आमे जानि चंती किंतु आमे किछि धरिकी रखी पारले नाही वर्तमान बेला आसीची आमे फाइट करिबा ताकू केमिति आम भारतर अवदान बोलिकरी आमे समस्ते ताकू ग्रहण करिबा किंतु एबे सारा बा आमे जदि कहउतंती आपण माने गोटे कथा जानती समस्ते कहउतनी सर्वप्राचीन जो गणतंत्र राष्ट्र अमेरिका और ब्रिटेन भूल धारणा गोटे आपन को प्रमाण दउची आपण देखंतु दुष्मंत और शकुंतला तांकर जो पुआ भरत से भरत जो राजा होते से साम्राज्य तैयारी करथिले
एकवर्ती एक एक छत्रपति साम्राज्य तैयारी करते क्या जानते चीन थिला रशिया थिला पाकिस्तान थिला म्यांमार थिला तिब्बत थिला नेपाल थिला आउ आपण तुर्किस्तान थिला उज्बेकिस्तान थिला कहीं कुआड़े पलैला एवं भारत को आसिक इंग्रेज माने कौन कले ना आमे खंड खंड जो थिला ताको आमे सजाड़िलु कौन सजाड़ी जानते ना ताको इंडिया ना कर देइचंदी इंडिया रे किछ मान्य अछि आपण माने देखंतु भारतर ना कौन भा अर्थ है ज्ञान रत है ताधे लागिकी रहिबा अर्थात ज्ञान सहित संश्लिष्ट होइकी रहिबा कहीं आमे ताकू सारी सारिचु एबे जहा अछि आमे ता विषय जानिबा एवं साधारणतः आमे त्रिकोणमिति जेहेतु आमर होउची बा आमे त्रिकोणमिति विषय किछि किछि जानिबा एवं सेटा होउची आम पई बहुत भलो हबो एवं आमे त्रिकोणमितिर व्यवहार बा प्रयोगटा केवल भारत रे समस्त को स्वीकृति प्रदान करिसंती तेणु आमे त्रिकोणमिति के आमे दिबा बंधुगण ये हैला ये जो प्राचीन भारतर इतिहास आमे ये गोटे काम करिबा जे त्रिकोणमिति की केमिति सहज सुंदर सरल करी पिला मानक पाखरे पहुंचई परिबा सेटा हो आमर ध्येय बंधुगण आमे गोटे कथा करिसंती आमे पढ़ेइचंती समस्त त्रिकोणमिति किंतु वर्तमान आपण देखंतु आपण माने करिवे फॉर्मेटिव जो 1 2 दीटा करिवे से दीटा को करिवे 20 मार्क्स रो करिवे आपण माने ऑब्जेक्टिव करिवे एवं नवेम्बर मासरे जेते बेले आपण करिवे जे प्रथम क्वेश्चन जोरा करिवे बा समेटिव रो प्रथमना जोरा करिवे सेटा होउची आपणकर से मध्य 50 नंबर होउची ऑब्जेक्टिव तेणु आपण माने किभली भाबरे पिला को ट्रेंड करिवे जे से ऑब्जेक्टिव सबु करि परिबो आपण माने एते वेल वर्स अबाउट द सब्जेक्ट मते आ कहया पड़िबनी तथापि मु किछि आनिति आपण मानक आगे आकु उपस्थापन करूची सेही क्वेश्चन गुड़ाक ताधरू केतिक आम बहिरु टिके अधिका उपरकू जाइछि ताकु मु आपण मानू कहबी जदि मते समय टिके अधिका मिलिबो मु मध्य आई हैव सिलेक्टेड सम फ्रॉम एपी एंड आल्सो 1 or 3 क्वेश्चन फ्रॉम द सिमिलरिटी जो गुडा कि आपण मानक पे निहाती दरकार कारण मु दीर्घ 15 वर्ष धरिक जो आपण मानकर सहित रही बोर्ड सहित संपुक्त रही आपण मानक किछि किछि अधिका बा नुआ क्वेश्चन सहित परिचित करैछि ता विषय मध्यम आपण मानक कहिबी तेणु एबे आरंभ करबा हमर त्रिकोणमिति मु हाराहारी आपण पई आनिछि किछि क्वेश्चन जोउडा कि आपण माने जानिचंती किंतु ताकु टिके डिस्कशन कर दबा एवं डिस्कशन कर देले आपण माने पिला मानकु तो भलो भाव रे करै देले पिला आउ किछि चिंता करिया को पड़िबो नाही एवं जे कोनसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन आसीबो मध्य से ताकु करि परिबो बंधुगण एरी मु क्वेश्चन लिखुची एवं ऑप्शन मध्य लिखि दउची आपण माने को कहि दउची आंसर गुडाक से गुडाक आपण मानकु लाभ बिल मु आशा करूची देखा जाऊ कोन हबो POQ रे P कोण हला 90 डिग्री एवं OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 sin थीटा रो मान केते एडी ऑप्शन हला ए हला 7/25 बी हला 24/25 सी हला 7/24 डी हला 5/24
आपण मानकु टास्क दवा पे चाहू नहीं कारण मु आपण मानकु कहि दवा पे चाहूची आपण मान देखंतु एटा आ थारु एक बेसी मु यदि एटा को x नै जीबी एटा हे जो x + 1 ताले हमें x टा फाइंड आउट कर दे नै जो x + 1 रो स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू हे ला केते ना इजा 7 सेंटीमीटर ताले x + 1 रो स्क्वायर minus x square is equal to 49. Solving it, we can find it out. X is equal to 24. Therefore, PQ is equal to 25. Now, we get H is equal to 25. P is equal to 24. Sin हमें को कोण लागिची sin ए कोण p टा हिजो ए कोण जदि हमें करबा हमको पिला को सिखेया को पड़िबो ए कोण एटा हिजो बेस एटा हिजो परपेंडिकुलर तेणु पिला को आको भलो कि जदि न सिखेबे ताहले पिला भूल करिवे तेणु एठी ए पे गला एवं p हे गला 7 द आंसर इज 7/25 आंसर इज योर 7/25. Very easy question. किंतु यही उड़ा का हमें ताको पकोचे करे and this is not in your book. We can say it as an understanding question. It may be also an application question. तेणु अपन माने ए टाइप रो क्वेश्चन सबले सेट करंतु पिला माने आ द्वारा लाभवान बेसी हेबे देखिए ना हां ठीक है हां जहां कोई ना ठीक है आओ सेकंड क्वेश्चन अपन बतौंती बॉडी क्वेश्चन अपन मान देखंतु cos 90 degree minus theta into cosec 180 degree minus theta रो मान आपण माने कहया भीतर कहि देई परिबे एटा हे गला sin theta एटा हे गला cosec theta so it is equal to 1 your answer is 1 it is very easy कारण ये क्वेश्चन मध्ये आपण मानकर मल्टीप्लिकेशन में आसी पारे PQ R त्रिभुज रे एंगल Q is 90 degree ताहले cos square P plus cos square R is equal to केते आंसर है -1 0 अनिर्णय आउरे हला आपनकर 1/2 1/2 ने 1 आपण देखंतु cos square p plus cos square r आपण माने पिला मानो केवल खाली कहंतु से cos p आउ cos r बाहर कर दउ तापर इजीली हे जाई परिबो आपण देखंतु cos p is equal to a angle of p is equal to b by h cos square p pq square by pr square plus cos square r ताले qr square by p square r now it comes
PR square PQ square plus QR square, which is equal to PR square. This becomes PR square by PR square, which is equal to 1. Similarly, यही क्वेश्चन ता मध्य आपण जदि करिवे ए क्वेश्चन ता बुली करी आसी एई पारे आपण माने आको कर देई पारिवे जे sin square p plus sin square r, it will become 1. The same procedure you have to follow and it will become, but it will be 1. It will be 1. A और B दुईटे अनुपूरक कोण हेले sin A into cos B plus cos A into sin B रा मान केते very easy. Now it comes if AB जदि दिटा अनुपूरक कोण होंती we know A plus B is equal to 90 degree. Now it becomes sin A into cos B plus cos A into sin B is equal to sin A plus B, which is equal to sin 90 degree is equal to 1. It is not new to you. Again? Oh. त्रिभुज एबीसी रे मेजर ए लेस देन 90 डिग्री कैसा बड़ा बड़ा अक्षर है अगेन ये बड़ा बड़ा अक्षर है हां ठीक है मेजर बी is equal to ताले it is given cos A is equal to sin B हेले A plus B रा मान केते very easy. It is given A less than 90 degree, B less than 90 degree, but as it is given जे बीटा को less than 90 degree हेले ताले हम करिया पड़िबो त्रिभुज एबीसी अछि एवं एठी we have to give one thing angle C का को दिया है C is equal to 90 degree दिया है तो therefore दर्शन नहीं कर not necessary. This condition is not there. Sin A is equal to sin B by cos A is equal to cos 90 degree minus B. Therefore, A is equal to 90 degree minus B, which is equal to A plus B is equal to 90 degree. Not necessarily it should not be giving the another condition that C is equal to 90 degree. So it is very easy. आपण माने मो सहित शेयर करंतु मु जते आधार क्वेश्चन जते टाइप रो हबो मु आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग cot 114 degree into cot 156 degree
ର ମାନ केते एटी दिया है 1 -1 0 1 by √3. You have to say the children the relation between 90 and 180. You see, cot of 114 degree is equal to cot 90 degree plus 24 degree into cot 180 degree minus 24 degree. Now it comes to the form of 24 degree, which is equal to minus tan 24 degree into minus cot 24 degree. So minus minus equal to plus, so it becomes 1. Your answer is 1. आपण पिलांकु एई भली ट्रेन करंतु जमा किछ असुविधा होबनी जेते गुडे अंक अछि चेष्टा करिबा सब प्रकार आउती आस्ते आस्ते टिके डिफिकल्ट को दिबा एगुडा तो सहजिया another question measure A is equal to 90 degree in triangle ABC. Cos B minus C is equal to half. ताले measure B केते? How much? It is given. It has already been given. Measure A is equal to 90 degrees. Therefore, B plus C is equal to 90 degree. Again, it has been given cos B minus C is equal to half. Therefore, B minus C is equal to 60 degree. So B minus C is equal to 60 degree. Adding those two, 2B is equal to 150 degree. Therefore, angle B is equal to 75 degree. So now angle B is equal to 75 degree. ये टाइप रो क्वेश्चन गोटे ए जो दो क्वेश्चन का पढ़ी बहुत थर बोर्ड रे ताको मु कहूची cos 140 डिग्री रो मान निम्नस्थ काहार मान सह समान मुआको निम्नस्थता काहेकि व्यवहार करूची आपण माने को कहबा पे चाहूची आपण माने एथर को स्कूल ले क्वेश्चन करिया को पड़िबो कारण जेतिक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपण परीक्षा करेइबे आपण को करिया को पड़िबो सेही पई कहूची निम्नस्थ शब्द तार बहुत गुडे बाहरी पारे किंतु निम्नस्थ दे देले आपण को तार भीतर बाछिया को पड़िबो आपण देखंतु माइनस sin 50 degree, sin 40 degree, cos 50 degree, cos 40 degree. ताले अब तो क्या आसबो ना cos 140 degree is equal to cos 90 degree plus 50 degree is equal to minus sin 50 degree. So this is your answer. So आपण मानू को एक टाइप रो क्वेश्चन सब पिला को ट्रेन करिया को पड़िबो These are all expected questions. आ गोटे मन अछि गोटे मंदिर उच्चता केते मीटर
ସେହି ସମତଳରେ ଏହାର ପାଦ ଠାରୁ ସେତିକି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ମନ୍ଦିରର କୌଣସି ଉନ୍ନତିର ପରିମାଣ କେତେ? ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦଉଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦିଆ ହେଇଛି ଯେ କଟି ଯାଇଛି କୋଉ ଗୁଡାକ ନା ଆପଣଙ୍କର ଖ ବିଭାଗଟା କଟି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଖ ବିଭାଗଟା କଟିଗଲେ କ ବିଭାଗଟା କଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ନା ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आसीपारे मल्टीपल चॉइस आसीपारे। एई गोटे कथा विदाउट डूइंग दी फिगर आमे केमिति आ कहि परिबा आपण मान पिला ट्रेन करिवे मंदिरर उच्चता सहित यार पाददेश सेतिकी दूर अवस्थित ताले मंदिरर उच्चता जेतिकी तार पाददेश ठारू सेतिकी दूर रे बंधुटी अछि ताले P is equal to B here P is equal to B ताले tan theta is equal to 1 ताले theta is equal to 45 degree तो आंसर हो गया आपनकर 45 डिग्री। cos 122 degree plus sin 148 degree रो मान केते आपन को आउ थारे कहि दउची जेते बेले मान पचरा जीव आपन डिग्री रे देबे नाही मान कुआ गला माने संख्या रे दबाकू पड़िबो तेनो ए क्वेश्चन निश्चित भाव रे गोटे संख्या बाहरिबो ता दिया है कि 0 1 2 -1 very easy 90 plus 32 122 हैला 90 degree plus 32 degree 148 हैला 180 degree minus 32 degree cos 90 plus 32 is equal to आपनकर हे गला केते -1 and this is केते हे गला ये मध्य हे गला आपनकर sin 32 एटा गुटे हैला -32 plus sin 32 which is equal to 0 this is -32 plus sin 32 which is equal to 0 so answer is your 0 A B C D वृत्तांत लिखित चतुर्भुजर चतुर्भुजरे cos B plus cos D रा मान केते वृत्तांत लिखित चतुर्भुजर ए बी सी डी गोटे वृत्तांत लिखित चतुर्भुज
B plus D is equal to 180 degree. Therefore, B plus D 180 degree. B is equal to 180 degree minus D. Cos B is equal to minus cos D. Therefore, cos B plus cos D is equal to 0. So answer is your 0. त्रिभुज एबीसी रे tan A plus B रो मान तीनस्थ मध्यरु कहा सह समान it has been given ABC गोटे त्रिभुज ताले A plus B plus C 180 degree A plus B 180 degree minus C tan A plus B tan 180 degree minus C which is equal to minus tan C. तार आंसर है जो ऑप्शन दिया है थिबो एटी ऑप्शन अछि sin C cot C minus tan C plus tan C. So your answer is here minus tan C. अब आपण गोटे बही क्वेश्चन गोटे दउची इटा हला cosec square 125 degree plus alpha minus cot square 55 degree minus alpha रो मान केते आंसर दिया है 0 B1 C root 3 by 2 D 1 by 2 125 degree plus alpha is equal to 180 degree minus 55 degree minus alpha. So cosec square 125 degree plus alpha minus cot square 180 degree minus 50 degree minus it is 125 degree plus alpha it is 55 degree hela mane एटा हे जिबा आपनकर 125 के हम चेंज कर दबा इतो और दिस ताले हमें लिखिबा cosec square 180 degree minus 55 degree minus alpha minus cot square 55 degree minus alpha which is equal to cosec square 55 degree minus alpha minus cot square 55 degree minus alpha which is equal to 1. It is a very question.
बही टिके अलग दिखाई टिके अलग प्रकार आसी तेणु आपण मैंने या भी करा पड़ो कारण आप जिते पारे सेते एगुड़ाक करेंगे कहीं पिला गुड़ाए समय ट्रेन हो गला जमा कष्ट हम ना से क्वेश्चन देखिदे कह आउ गोटे एक सीढ़ी गोटे कांथर पाददेशरू 15 मीटर दूर रे दरकार नहीं चा दरकार एक सीढ़ी कांथर पाददेशरू 15 मीटर दूर रे अवस्थित एक बिंदु रे 60 डिग्री आनतरे कांथर शीर्ष देश को स्पर्श करे सीढ़ी दैर्घ्य केते जदि आम फिगर करवा तो भल पिला फिगर करने को डेरी हो पारे से आपन कहे सीढ़ी कांथर पाददेशर 15 मीटर दूर रे जो समकोणी त्रिभुज हम ये बी हो 15 आउ थीटा हो गला 60 डिग्री सीढ़ीटा निश्चय हम के एच सीढ़ीटा निश्चय हम एच therefore the relation between the sampark b and h which is cos therefore cos 60 degree b by h 15 by h 1 by 2 is equal to 15 by h therefore h is equal to 30 meter ताले सीढ़ी रा दैर्घ्य हे जबा 30 मीटर आपण सब बेले पिला को यही टाइप शिखातु जिते फिगर करके बहुत समय लगुच से मुंडे पूरे दिंतु बी आउ एच पी भितर संपर्क जानीगला असुविधा हम नहीं टू cos 43 degree into cos 17 degree minus 2 sin 43 degree into sin 17 degree मान we can take it 2 common now it becomes cos 43 degree into cos 17 degree minus sin 43 degree into sin 17 degree so it becomes 2 cos a into cos b minus sin a into sin b so it becomes cos a plus b therefore it becomes cos 43 degree plus 17 degree is equal to 2 cos 60 degree which is equal to 1 these are the questions to be set यही प्रकार क्वेश्चन सब सेट हम आउ आपण मानकर ताजर भी अच्छी आउ टिके आगु गले आमे अंडरस्टैंड एप्लीकेशन क्वेश्चन आड़ को जीवा एटा टिके कहि दउची can a minus b is equal to -1 cot a minus b that tan a plus b cot a minus b is equal to 1
B ର ମାନ tan A plus B is equal to -1. Therefore, A plus B is equal to 135 degree. A minus B is equal to 1. So, A minus B is equal to 45 degree. हमर B रा मान माने हैला माने माइनस करिया पड़िबो 2B is equal to 90 degree. Therefore, B is equal to 45 degree. Angle B is equal to 45 degree. Sorry. ये जो अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन आसिला एटा गोटे अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन होची निम्नस्थ केउ शर्त रे sin 180 degree minus theta is equal to sin theta. शर्त A हला 0 less than theta less than 180 degree. B 0 less than equal to theta less than 180 degree. C theta less than 90 degree. D 0 degree less than equal to theta less than equal to 180 degree. एटी क्वेश्चन जे अछि निम्नस्थ केउ शर्त रे sin 180 minus theta is equal to sin theta हेबो आमे गोटी गोटी के वेरीफाई करिवा 0 less than theta less than 180 degree ताहले 0 मध्य इनक्लूड नहले 0 इनक्लूड हेई परिबो सो एटा रहि परिबो नाही एठी कहला 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 180 कर देला ताहले 180 डिग्री हेले मध्य याको सैटिस्फाई करिवो तनु हम याको डिस्कार्ड करले थीटा लेस देन 90 डिग्री काई theta 135 degree allowable. So theta may be more than 90 degree. So this is discarded. Now it comes 0 degree less than equal to theta less than equal to 180 degree. ताहले this is your answer. आपण देखिबे 180 डिग्री माइनस थीटा जेतेबेले आपणकर बही रे लिखा जाईची सूत्रटी तार धीरे ए कंडीशन टी दिया जाय ये मध्य गोटे अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन हिसाब रे आसी पारे सूर्य कणिक उन्नतिर परिमाण 30 डिग्री बेले गोटे छाईर दैर्घ्य 18 मीटर हेले गछर उच्चता केते मीटर एई जे आपन को गोटे पिला मानु कहिया पड़िबो उन्नतिर परिमाण हैला 30 डिग्री जदि एबी हैला गछ ताले बीसी एथि छाई हबो ताले बीसी छाई हेले छाईर दैर्घ्य मागिची ताले वी रिक्वायर बी कौन दिया है छाईर दैर्घ्य बी इज इक्वल टू 18 मीटर हेले पी केते ताले पी आ बी रो रिलेशन के हमें पाइबा tan को आसीबा
tan 30 is equal to P by B, which is equal to P by 15. Now 1 by root 3 is equal to P by 15. So P is equal to 5 root 3. ଅକ୍ଷର ପୁରା ତାହେଲେ 6 ରୁଟ୍ ହବ। Now it becomes 6 root 3. Is our understanding question? Cos 1 degree, 2 degree, plus 3 degree, plus dot 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 15 degree रा मान केते एठी आपण मान देखंतु 1 2 3 up to 15. The sum is it comes under AP n into n plus 1 by 2. Therefore this is equal to 15 into 16 by 2, which is equal to 8. ताले 120 degree. ताले cos 120 degree is equal to minus 1 by 2. ताले यार आंसर है minus 1 by 2. Sin 75 degree minus sin 15 degree. ये जब यार मान केते मान केला माने निश्चित भाव रे गोटे संख्या रे आसीबो जे संख्या रे आसीबो आमे आको केमिति करबा ना 75 is equal to केते 45 degree plus 30 degree. 15 is equal to केते 45 degree minus 30 degree. So it comes sin 45 degree plus 30 degree minus sin 45 degree minus 30 degree. Sin A plus B minus sin A minus B, which is equal to 2 cos 45 degree into sin 30 degree. 2 1 by root 2 into 1 by 2. ताले उठे केते हे गला 2 2 कैंसिल हे गला, which is equal to 1 by 2. This is your answer. आगोरे हाइट एंड डिस्टेंस रो गोटे क्वेश्चन सेठी आमे अवनति कथा कहि नांती एठी 15 मीटर उच्च एक स्तंभर शीर्ष बिंदु रु ए जोडा अवनति कथा कहिला अवनति हला केते ना 30 डिग्री ताले ऑटोमेटिकली ए एंगल का हे गला 30 डिग्री हेले स्तंभ हला 15 मीटर
तारे ए जो गोटे कार अच्छे ए कार दूरटा केते हमको बीटा दरकार बीटा दिया है कि बीटा हमर फाइंड आउट करबा ताले tan 30 डिग्री is equal to P by B 1 by root 3 15 by B, therefore B is equal to 15 root 3. तेणु तार उत्तर हो 15 root 3. क्वेश्चन दिया होती 15 मीटर उच्च एक स्तंभर शीर्ष बिंदु एक समतल रे थिबा एक कार कौणिक अवनतिर परिमाण 30 डिग्री हेले स्तंभ ठारू कार दूरता केते मीटर tan 105 डिग्री रो मान निम्नस्थ मध्यरु केते √3 + 1 by 2 √2 √3 - 1 by √3 + 1 2 plus √3 minus 2 plus √3. ए क्वेश्चन टी आपन को एरा टिके डिफिकल्ट पिला कहि पारे ए जा होची एप्लीकेशन क्वेश्चन पिला tan प्लस बीटा को आ करबो आ जाई की एप्लीकेशन क्वेश्चन tan 60 degree plus 45 degree is equal to tan A plus tan B by 1 minus tan A into tan B. √3 plus 1 by 1 minus √3, which is equal to minus 2 plus √3. Because you can multiply 1 plus √3 here and in the numerator denominator, so the numerator becomes -1, so it will be minus 2 plus √3. Tan 5 degree into tan 7 degree into tan 85 degree into tan 83 degree रो मान निम्नस्थ कहा संगे समान ऑप्शन है sin 60 degree plus cos 60 degree, B है sin 30 degree plus cos 60 degree sin 30 degree minus sin 60 degree, D है sin 60 degree minus cos 30 degree. बढ़िया क्वेश्चन के एजी 5 टा tan 5 into tan 85. Now 85 becomes 90 minus 5, so it will be cot 5 degree. So tan 5 cot 5 is equal to 1. Now tan 83 is equal to tan 90 degree minus 7 degree, so it becomes cot 7 degree.
cot 7 degree into tan 7 degree, it becomes 1. So your answer is 1. By our manna higala 1. तापर आकु आमे देखिबा जे काहार मान 1 होची sin 60 cos 60 केबे 1 हे परिबो नाही एटा √3/2 सॉरी एटा √3/2 एटा +1/2 हे परिबोनी एठी के आसीबा 30 डिग्री cos 60 डिग्री 1/2 1/2 your answer is sin 30 degree plus cos 60 degree